Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, and a good afternoon, ladies and gentlemen. God, just a sec. How are you guys doing today? Dubai, India, UK, everyone, each one of you, what's happening across, um, you know, each one out there who join these streams, what's happening with you guys? This is Zbit platform where we talk everything that's related to cryptocurrency, financial markets, and financial products. So, what's up with you guys? I'm waiting for some people to join in while we are starting this stream. Let's just hope that some of you join the stream and we have some. Come on, guys. So, all the beginners, people who join this stream, I'm going to basically let you know that Zbit is finally launched. You all know that Zbit is launched online on the Play Store. It's available in two markets right now. One is Nigeria and other one is India. So you guys can use this platform to start your trading journey if you haven't started so far. So what do you have in store for yourself? Now that's a question that every one of you, each one of you might be asking and must be wondering what we should be getting out of it, right? So first and foremost thing that I want to tell you guys is that Zbit is offering some amazing, things on its platform. One of them is obviously the bug hunting event, which is going on its platform, where we basically just a sec. Where is my phone? I'm going to just a sec. Okay, so to all the people who are registering for the first time, let me reiterate there's a good, great lottery that's going on where you can earn 1200 up to like dollars, and it can be in the form of any cryptocurrency that you like, maybe Doge, Pepe, Solana, Ethereum, Bitcoin, whatnot. So many options are available. That's a passive way of making income, guys. So you have to explore this option right now. The QR code is mentioned on the screen. I'm going to share my referral link too. Just a sec. I haven't logged into my ID. I'm going to share that as well because I want you guys to use my referral code to register, which will give me yeah, hold on. Yeah, so there is what do I do? I have to log into my account. I'll give you my referral code. So before I proceed, I'm going to let you know that hold on. So I've got guys, while you can use this QR code to register,
There's another way through which you can also register. Okay, just a sec. So I'm providing you with my link out here so that you can use this to basically buy the crypto, start your trading journey. Yeah, here it is. And that's my referral code. Okay. So there are two ways through which you can register yourself. One is the QR code that you can see on my screen that you can use to basically download the app. And other thing is you can use my registration link to be able to get some amazing benefits out of it. Guys, use my referral link to register so that you can download this app and you can basically get the chance to enter into the lucky draw that's going on the platform. You can earn some free crypto out there, so you can basically use this platform for all of that. That is one thing. Now, second thing is the big bug hunting event that we talked about. There is my Telegram community, which you can be part of. You can scan this QR code to join the Telegram community, and the QR code is also there for joining in. While I've also shared my referral link and referral code, you can use this as well to download and to basically be part of our community. So which platform is offering you anything better than this? Let me know in the comment section. I don't think any platform is offering you anything as such, where you find a bug, you find an error in their platform, and you basically report it to them, and that's how you end up getting paid for it, like you get rewarded for it. So do you think, is there any better way of earning free crypto like this? I don't think there is any. Other than that, on the platform, when once you get onto it, you have a referral program which is very much available to kind of help you in starting your referral journey, which means that the more you refer friends, the more you refer people, the more it is going to be rewarding for you. So you can look into, just a sec. You can look into basically yeah, that's about it. I wanted to join this Telegram community here. Let me just do this. I want to show you guys what's happening on the Telegram community too.
Mm, let me open. I thought I had Telegram here. Oh, it's here. Why was I not opening it? Guys, I don't know what's wrong with it. I thought I could share this with you guys. Okay, somehow there's some issue. Anyways, so you have on the screen our QR codes for Telegram community as well as to download the app. So that's what you can use basically to download. Okay. Now coming to what the crypto markets look like. Um, Today on the market overview side, today's session we're going to talk about two to three different things. One is we are obviously going to go through the market overview that we're going to do, which we will definitely do. And after that, we will be talking about a bit of spot trading, a bit of spot reversals, how we can detect or find out trend reversals and things like that. So those are some things that we will be talking about. And other than that, I think that is how the 4 hour session will be. So on the market overview side, as you can see, Bitcoin is trading at 108, 512. It's positive 0.39%, and Ethereum 2553. It's basically positive by 1.59%. BNB at 661.84, positive by 0.86%. Solana at $152, positive by 2.66%, and XRP at 2.2786, which is basically at 0.56%. So total crypto market, it stands at 3.36 trillion as of now, with slight daily dips and ongoing volatility. Bitcoin has surged around 15% year to date, hovering near to 109 to 110k, testing the resistance around 109 and 110 with technical support near 106k. And Ethereum is basically gaining institutional traction with new spot ETF inflows continuing, underperforming YTD, but poised for a rebound. So these are the key updates on the key cryptocurrencies. Now, what are the key drivers that are driving this thing today? Is basically BTC spot ETFs have gathered over 14.4 billion in net inflows so far. ETH spot ETFs has basically gathered around 1.16 billion US dollars, and new funds launching in the altcoin space, including Solana and multi-asset products. So all of them are basically being they are into the net inflows. Like, there are, despite of all the negativity around the market, the Bitcoin and ETFs basically are performing well. There's too much of inflow through that. You can see the volume also, as compared to yesterday, has slightly gone up. I think it was ranging between 65 point some dollars, 65
$0.34 billion or something. Now it's almost at 92.34, which is significant amount, I believe, as per whatever has happened past 24 hours. On the macro and geopolitical side, if I talk about what's happening on the macro and the geopolitical side, right? So on that side, US Treasury hints at favorable trade deals. BTC briefly rallied over 109k. XRP, Solana, and Dogecoins are gaining simultaneously. Ongoing geopolitical tensions, example the Middle East one, fueling volatility. BTC dipped below 100k in June before recovering. So this is all that is hampering on the macro and the geopolitical side of it. Now, coming to the regulatory and the policy side of it, US House set to discuss digital asset tax policy on July 9th under initiative Making America the Global Crypto Capital. The Stable Framework Genius Act passed Senate mid-June, House vote expected July 16th. This is what the news is on the Genius Act. Now, to people who do not know what is Genius Act, I'm going to talk a little bit of Genius Act 2 today. We will be focusing a bit of that today. So, US executive actions establishing strategic Bitcoin reserve and prohibiting CBDC, highlighting growing state-level crypto involvement. So, that's about regulatory and the policy framework that we're talking about, and yeah, that is what it is. Now, highlights from the DeFi, altcoins, and on-chain. I'm going to come back to the Genius Act. Just remind me after some time that we do have to talk about Genius Act, and we have to talk about one big beautiful bill. Recently, so many things have been discussed and has been passed in the US Senate, and that is part of the conversation. That is part of this, things that we talk about. So we are going to discuss on that part too. So don't worry, we will come back to Genius Act as well as we will be talking about the big beautiful bill too. Now, on the highlights from the DeFi, altcoins, and on-chain, total crypto market is up by 2.6%. BTC dominance remains at 65%, highest since 2021. And top monthly performers on the altcoin side is Hyperliquid with 24.7% momentum that it has gained. BCH gaining a 20.7% momentum. Laggards are Doge, which was basically minus 12.7%, Cardano minus 16.5%, Solana minus 2.2%. So all these have basically been not performing well. So Doge and Cardano and Solana down, by the way, but it's a good news for Hyperliquid and BCH, to be honest. So that's how the altcoins are performing. And if you talk about surge in tokenized treasuries, so it's basically up by 7.4 billion US dollars, offering stable yield alternatives to stable coins. We see investments, they remain steady in DeFi, AI protocols, and hybrid exchanges. I think there was recent news, if I remember, regarding cloud spaces or something, like I think it was something related to Alibaba or China expanding onto the cloud-based services, cloud-based companies, things like that. So yeah, on the VC side, like on the venture capitalist investment side, they remain steady on the DeFi and the AI protocols and hybrid exchanges. That is what the news is all about, and not much to be seen around anything else. Now, what do we have to watch in the coming few days? What do we have to watch? So basically, July 9th is a significant day for all of us, and it's a US digital asset tax hearing. So that could shape short-term market sentiment. So we need to watch it out.
probably on that day, once we get to know some piece of information that might be basically of some use, and it might help in our informed decisions, that we know probably whether to buy or to sell is something that we need to look out for on July the 9th. I think today is what, 7th of July. So two days, and we know that basically we are going to be either having a positive or a negative news, which may or may not, which will impact the overall crypto markets or the decisions that you guys make in the crypto market. So that's about the July 9th. Coming to the mid of July, there's a House vote on Genius Act likely on July 16th, which will bring clarity to the stablecoin regulation. So like I said, guys, I'm going to talk a bit of what is Genius Act, as well as what is the beautiful bill that is being passed, and how it is going to actually impact the overall crypto laws and regulations, and also how it is going to overall impact the crypto markets is what we are going to discuss in coming few minutes. So you have to hold on until we get back to that topic. Yeah. Now moving on to the ETF moment. We have to further watch for the inflows for the BTC, ETH, Solana, and multi-asset ETF. So right now, the current trend is BTC and ETH are continuing to have some great net inflows, despite of everything that's taking it for a roller coaster ride, right? So I think what I really feel and what I really think is, despite of wars, despite of the world going upside down, it's still on the go. This Bitcoin and ETH, basically they are there for the long run. They're not going to die so soon. They're not going to vanish just like it. So I think that is going to be there for coming days, and it will continue to grow. So that's about the ETF momentum that we're talking about. So that's also something, a point of thing that we need to watch out for the coming days. Coming to the geopolitical triggers, ongoing global tensions may drive short-term swings. We will have to watch it out. We've seen that Donald Trump is continuously going on, making some kind of decisions out there in terms of maybe if we talk about the tariffs that we're talking about. He was planning to put tariffs on 12 countries, and there was I think there was a bill. If I'm not wrong, there was something that he was going to sign a document where he was going to literally mention what the new phase or the new, outcome of it would look like, what it would mean, and whatever the tariffs that he's trying to put on all those countries, how it is going to basically be put, and all that framework and everything would be, shed on that, on that particular bill that we're talking about. So that is what was in the news. I think that is something we all have to watch out. So it's basically the digital tax asset hearing. So don't forget, you have to go and watch this out. What's happening on the digital asset tax hearing. So how it is going to shape up the short-term market sentiment. That is what we need to watch it out. And in the mid of July, we have an upcoming very important event, which is about the Genius Act, likely by July 16th. So that might shape up the overall crypto markets in a very different sense. So probably positive, negative, don't know what's going to happen on that front, but we need to watch it out, how the clarity on the stablecoin regulation would be. Most probably, I just get the feeling that it is going to be a positive outcome, because regulation means it's an ease, right? Basically, it's a period of ease. It's a period of relaxation. It's a period of, say, like we are in that zone where we are protected, safeguarded, and whatnot. So that's I think what it means. And coming to ETF momentum, if I talk about basically, we will have to continue watch out all the stable cryptocurrencies out there, including Solana and multi-asset ETFs. So probably we might have something new that's coming up. So inflows will continue to happen. The institutional adoption will continue to happen. That's what I can get a sense of feeling. What do you guys think of it? You have to tell me in the comment section, and you can reply me in the chat. So that's all up to you guys. So
Moving on to the fourth point that I mentioned. The fourth point is all about the geopolitical triggers. So ongoing global tensions will drive some kind of short-term swing. So you'll have to watch that out as well. Yeah. Now coming to what? Coming to what? Let's move on. I was going to talk about the Genius Act, right? So the Genius Act is what we are going to put a bit of emphasis on. Now, so the word genius, basically, as you know, the word GENIUS, you must be thinking it is genius means a brave person. What could be the literal meaning of genius? Genius is like somebody who's like very smart by brains or something, like Albert Einstein or like Elon Musk. No, we're not talking about that genius. We're talking about genius, which stands for government engagement with the nation for nation's infrastructure for US Stablecoins Act. So this is a act. This is not a act. Sorry, this is an act which is being introduced by US. And this US bill aims to create some clear rules and regulations for stable coins like USDT, USDC, and others. So that's what it basically means, that it's going to create some clear rules and regulations for stable coins like USDT and USDC. So now, what is this Genius Act? This is the question I'm sure you guys must be having. So we all know there are companies like Circle and Tether, which issues USDC and USDT. So what it means for the Genius Act is like these companies like Circle or Tether will have to register with US regulators like the SEC or the Federal Reserve. Okay, this is one of the prerequisites to be part of the Genius Act. The Genius Act states very clearly that companies like USDC, USDT, companies who are involved in stable coins have to basically register with US regulators like they would register it on SEC or the Federal Reserve. So that's how that is one of the clauses of the Genius Act. Now, second thing is the prerequisite is 100% backing by the reserves. So it means that issuers will have to prove they hold actual dollars or safe assets like US bonds equal to every stable coin that they are issuing in the market. So this Genius Act, which is going to get passed into the Senate, that's so much that's been talked about. The second prerequisite or the second criteria that they are actually presenting is, apart from the companies like USDC or USDT to register themselves, is also to prove that basically there are actual dollars or safe assets like US bonds behind it, which means there is a reserve. So I'm sure, as a person, in finance, you must have always heard that stable currencies are always, basically pegged, or they are always, backed by reserves, like, some real reserves out there. So basically what we are talking about here is, there is actual dollars. So it's just not in air. It's like something where we basically know that there are actual dollars or some bonds, some investments behind it. So why do we do this? Now, why do we do this is because these are getting issued into the market out there, which means the people are going to buy them, and people are not just going to buy them for having no value, right? Like how Bitcoin is basically having a store of value. We want to make sure that when we invest into any stable coin, we know that there is actually some kind of real value behind it. And how can we prove that basically it has some real value? It can only be proved when we know that there is real dollars or some investment, pegged or backed behind it. So that is how we will be knowing. So this will prevent
Now, why would they do this, or why would they want to do this, is because they would want to prevent the risk of printing money from nothing. So imagine, we all know that there was a time when printing money basically was very common among a lot of nations. Like they thought, with just printing the money will solve their issues. But there were countries, I'm sure, if I'm not wrong, if it was Zimbabwe, not Zimbabwe, I think. I'm not able to recollect that name, but there was a country which printed basically too many printing notes, and then they ended up getting into too much of inflation, because printing money actually gives the purchasing power to the people, which in turn increases the demand for products. And if in case the demand is not being met, then there comes a thing where the prices are inflated, and because demand is more, the price inflates, and then the demand is not met, and vice versa. So many things that happen when printing of money happens. So in order to curb this thing, which basically governments like to put an end towards printing money, they would want that there is enough currency in the market, in the sense that it is there for both meeting their surplus and deficit. So on the balance of payments, if you see in the GDP, while they are calculating the balance sheets or the balance of payments, they want to make sure that it is in balanced condition, not like it's either in too much of surplus or too much of deficit, and then they end up making some wrong kind of decisions or some kind of wrong monetary policies, which will end up in making the economies either go inflated or go to recession. So that is what either of the ways it happens, and that is how of late we have seen, because of the faulty decisions made by the governments or the financial systems, each country, the global economies have suffered a lot. And that's why the US now do not wish any of the countries to go and print money and cause this inflation or cause any kind of disruption in the economy. So that's why they say that whichever company is involved in issuing stable coins, they have to make sure that it is backed by dollars. It is having some safe asset behind it, like US bonds or something. Then only they will issue these stable coins. This is what the Genius Act is proposing. So yeah, I will be further talking about it. Give me a second. Now another thing which is part of this Genius Act is that issuers must go through independent audits to show their reserves are real and accessible. So when we talk about independent, like when we talk about these issuers, the companies, like issuers in this sense is the companies like USDC or USDT, which are involved in issuing USDT or USDC. So those issuers, they should go through independent audit is what the requirement is. So to show their reserves are real and accessible, which means they're not just issuing those stable coins just for the heck of it. So it means it has some real value out there, and it is very much important that we know what is happening in real terms. So this is another piece of proposal, like that's another proposition being part of that Genius Act which they propose, and that is what they expect that the issuers should follow. So first thing is they should register. Second thing is they should have a backing. Third thing is they should have independent audits to make sure that it is real and accessible. Now fourth point here is no algorithmic stable coins allowed. So it bans unstable coins like Terra USD that collapsed in 2022, and only stable coins with the real reserves are allowed, which means if there is no backing behind it,
then there are no algorithmic stable coins allowed in the system. That is what they say. So now what they mean to say is that behind every stable coin, if $1 is issued, there is actually really in real terms $1 behind it, so that tomorrow when it is falling due to pay, then basically the company should be able to pay towards the investors or the debtors or whatever. And that is how it should be. If it is an algorithmic stable coin, then it might be like it's a faulty one, where they don't have a real money behind it, and they might not be able to meet the requirements out there. So like Terra USD, in that case, you remember like in crypto, so many scams keep happening, right? And this is what the tradition has been, where they issue coins with no way to monitor them, no way to track them, with no way to there's no real backing out there, no reserves behind it, nothing like that. So it's very easy for any person, like any developer, to create a coin with no thing behind it. Like there's no how do I say, they do not have a backing out there, so it's so easy to create it and then just misutilize it, like pumping it and then dumping it like crazy. So that easy it is. So to avoid that scam, or to avoid that fraud, or to avoid that thing happening, now they want that there is proper reserve behind it, and there should be real reserves behind it. Until then, they are not allowed to issue any stable coin out there. That is what their proposal is. Now fifth point which they have presented in the proposal is that states can approve and Federal Reserve can supervise. So state regulators, so every obviously United States of America, like we know, it's a combination of so many states, I think 50 states coming together, right? So it says that the state governments or the state regulators can take care of it themselves and can approve issuers. So this can be taken care at the state legislation itself, and then they can approve the issuers, and Federal Reserve will step in, like how in any case, like for example, if we talk about traditional finance, in traditional finance how it used to happen, traditional finance, the commercial banks or the commercial banks take the decision, while the Federal Reserve basically monitors all the position, right? So whether or not we should let them like if there's any faulty or crazy thing going on, then the Federal Reserve is there to supervise and to kind of pull them back and make them realize that boss, you're going in the wrong direction, is what they are supposed to be knowing. So that is what they say, that a Federal Reserve will be interfering only when things go wrong, but the state regulators can continue to take the lead, and they can continue to monitor, to approve, to carry on the day-to-day thing, whatever is required. While in case something goes wrong, then yes, they will see that the Federal Reserve will interfere into this. Now, coming to why this Genius Act plays a very, very significant role, why does this even matter to any of us, like including me or you as a crypto trader or a crypto investor, it is basically all about trust. Okay, it's all about trust, which means that the stable coins will be safer to use. Now, I'm sure each one of you until now, without even knowing if there are any reserves behind it, or if there is actually it is actually pegged by any cryptocurrency behind, you didn't knew any of it, right? So
if in case you're falling victim to any kind of fraud or scam out there, you might not be able to recover out of it. That is what will happen, and that is what is happening. That is what has been happening, and since a decade, because of this decentralized finance, a lot of people who knew way too much in this industry took way too much advantage of this fact and misutilized this like crazy. Like, they knew how to create, they knew how to develop it, and they knew how to misutilize it. So they took advantage of it, and they have manipulated or cheated upon the other people, and basically that is how a lot of millions and billions of people, a lot of millions and billions worth of funds were stolen, hacked, whatnot. Like, so many things have happened. So that's why this Genius Act is totally going to change the way the crypto markets or crypto industry would look like. So in future, what's going to happen is, like, they are not going to, none of us are going to keep quiet, like including me or you or anyone, because we want our money to be safe, right? All of us are earning hard-earned money. It's not like we are going and just plucking the money from the tree, right? So what we wish to do is, basically, we want to make sure that the money that we put in, whether it's for trading or for investing, our money is safe enough. So for that purpose, this Genius Act is going to bring about a lot of changes, because the hard-earned money by each one of us, it matters, and that is what it is trying to create. Now, other than that, what else do we have on this part? Now, for the adoption part of it, banks and big institutions may start accepting stable coins. Now, in this scenario, because we know that all this while there was a lot of confusion, because the stable coins were algorithmic coins, and some banks or the financial institutions, or because there was no real currency behind it, there was so much reluctance by even any of them to adopt it. For example, even if I am there, imagine, like, if I know that there is no real currency behind it, why would I even go and take it, right? So I would rather keep it in my fiat currency, which is my actual real currency, rather than keeping it in that stable coin or whatever. So the whole point here is, it will lead to some kind of adoption where the banks and the big institutions will start accepting stable coins as a mode of payment, or a mode of not just payment, but something else also. So that's how it is heading towards. And the more adoption it is going to see, the more it is going to have a lot of inflows out there, and then these inflows are definitely going to create some great hypes in the market, and that is what is going to lead to the positivity side, to the positive side of it. Now, other than that, coming to the clarity, crypto companies will know the rules and investors will feel safer. Now, what's in for me? It's basically that the companies now are going to know the limitations. They're going to go and they'll know how the companies are supposed to be behaving, in the sense, now nobody is going to cheat anybody else, nobody is going to fool anyone else. So that is how it is going to be, and that is how the clarity is going to come, where the investors, the traders, everybody is going to feel safe, including all of us. So that's a good news for all of us, right? Yeah, so that's about it. And yes, avoiding another USD disaster. So what we talk about, the Terra USD back in 2022, when there was no proper backing by the reserves or by the real fiat currency behind it, because of which like it just dumped or whatever, like it kind of collapsed completely in 2022, and there was almost a loss of 40 billion US dollar because of that particular event. So we would not want another event as such to happen, and where we kind of, all of us, where we have our hard-earned money gets suffered because of it, right? So we don't want to suffer that way. So that's why this is very much needed. So now I hope you understand why this matters to us, why it should matters to us,
why are we even talking about it, why we should know about it in the first place, why we should know about it. It's very important we should know about it, because this particular act is going to shape up the future of crypto industry very, very much. It's going to shape up the way we look at it. It's going to shape up the trust factor. It's going to shape up the it's going to give us more clarity in terms of the do's, don'ts, advantages, disadvantages, what the companies are allowed, what the companies are not allowed. Everything that is basically should be in the form of regulation is going to be part of it, and all of us are going to be protected against it. So that's what is being expected by this Genius Act, and that is what we are heading towards. And I'm really, really happy and excited to know this and to be able to share with you guys too. So that's how it is happening. So I hope you guys are enjoying this video as much as I'm enjoying making this video and stream, talking so many things that are related to this industry. There are so many jargons, there are so many terms, things that we come across on a day-to-day basis. I know it's not going to be easy when you start your journey in crypto industry. It's going to be like too difficult, it's going to be too hectic and whatnot, but believe me, once you get there, there is no ending, and sky is the limit once you get there. So don't miss out on the chance and opportunity you're getting in this industry, guys. Even after a decade, there are n number of opportunities. Some of the cryptocurrencies are still in their growing phases, so we haven't missed out much. I know that BTC has outperformed, BTC has surpassed all the levels that we can even think of, but there's no ending towards the other stable coins or the other cryptocurrencies, right? So ETH, Solana, XRP, all of them are there for us. So don't worry about that, okay? So moving on to the status, as of July 2025. So as of now, this Genius Act is passed in the Senate in June 2025. Then it is scheduled for a House vote around July 16. So all the people part of the House, the White House, is going to vote around for it by July 16. So probably we'll know if there are any obligations coming for it, or if there are any further advancements, further upgrades, or maybe some changes in the the clauses that we've talked about already. Those are the things that we will get to know post July 16 back, because that is when it is scheduled for House vote. So I'm not sure if after the House votes come in, will there be any new proposals that will be coming in terms of somebody initiating any obligation towards it? Sorry, objection towards sorry for the wrong word. Objection, I mean, or if there's going to be like global acceptance for it, or if they are going to be bringing in some other clauses, and God knows, like whatever is going to happen. So now what is the aftermath of it? Aftermath of it is basically if this bill is going to get passed, or the act is going to be implemented, that is going to become a US federal law. So that's going to become a law as per US. It's going to be adhered to. It is going to be implemented in US. A strict legal action will be taken against the people who are not going to follow this. So these are the implications, these are the good and the bad things about this Genius Act. So hopefully we will see something positive coming out of it. So if any people, if any person, so far whoever has fooled others, so far whoever has looted people, it's time for all of you to hold back your reins right now, because this law, this act is totally going to disrupt all the bad things that you have in your mind about looting the people, fooling the people around, and then getting their hard-earned money out of it, out of their back pockets. So that is what it is heading towards. So I hope that this Genius Act it becomes a US law to regulate stable coins like USDC, USDT, and ensures they are safe, backed by real money, properly audited, and could help bring trust adoption into the crypto world. So that is what this Genius Act is all about. Let's just wait until July 16. Hopefully we will see some positive outcome towards it. If not,
uh, I'm sure this, for me, this gives me a positive feeling for sure. It's something giving me a positive vibe that with these regulations, there is going to be a lot of confidence in the hearts and minds of investors, traders, and everybody that yes, finally our money is going to be safe, our money is not going to go anywhere, we're not going to fall victim to any fraud, scams, and things like that. So I think that is going to move towards positivity. What do you think of it? Do you think it's going to head towards positivity or it's going to head towards negativity? That is what you want. You can basically comment in the comment section, and we will be discussing much more about that in the coming few days once the bill gets passed, and let's just see how this is going to become a US federal law. Now, moving on, after the Genius Act, we also talked about something called the Big Beautiful Bill, which is always in the news. We know that Big Beautiful Bill has been talked about so much, and I'm sure this, this particular term, you guys might have heard from the, mouth of the, how do I say, horse's mouth itself, right? So I'm sure you understood who I'm speaking about. So horse's mouth is, of course, I'm talking about none other than Mr. Donald Trump. So he is the one behind all these, things, good, bad, whatever happens in the crypto industry or the financial or the social, in the stock markets or things like that. So yeah, so the Big Beautiful Bill, basically, this was a name, it was a nickname presented or used by Mr. President Donald Trump himself in 2025 to describe a major to describe a major pro-crypto regulation, like legislation package. So the way now we know there is this Genius Act that is getting passed on. There was this is also one of the bills which basically he has presented, and he wants this to get implemented. And this is nothing but it's a major pro-crypto legislation that is bringing about. Now, to understand what this Big Beautiful Bill is all about. So it's a US federal crypto bill, okay? It's a US federal crypto bill aimed at making the US a global leader in crypto. So I think for ages, if I'm not wrong, US is trying to see this dream of becoming a global leader in crypto. So finally, this Big Beautiful Bill is going to give that edge to US to be a global leader in crypto. Hopefully, I just hope that they achieve this dream of theirs, which they've been seeing for quite some time. And then protecting the Bitcoin and other digital assets. So one of the main agendas behind this particular bill is to make sure that they're protecting the Bitcoin and other digital assets. So we know for a fact that Bitcoin, digital assets, none of them are safe, or even if they are safe, they are only safe until you remain vigilant or diligent about it. If you are ignorant about certain things, or if you are not educated enough, then it's very easy to fool and get the money out of you. So now what this Big Beautiful Bill is trying to do is they're trying to protect the Bitcoin and other digital assets from all kinds of wrong things that could ever happen. So that is what is the agenda behind this Big Beautiful Bill. Other than that, they are also banning the US central bank digital currency. So they plan to ban the CBDC, the central bank digital currency, and that is a digital dollar ban. That is what they're trying to do. I think with this Genius Act and a combination of Big Beautiful Bill, it's going to definitely bring about real results, which means which means that there is not going to be just algorithmic stable coin or a dollar out there. It's going to be a real one, which means there is a real reserve, real currency behind it. That is what they aim at. So other than that, what they aim to do is they are also trying to create favorable tax rules for crypto users. So
Under this bill, what they're also trying to do is they are also trying to create some favorable tax rules for crypto users, which means anything that was unregulated or anything which was hidden from the governments or hidden in the financial system. They're trying to regulate that part of it, where they are trying to give some favorable tax rules for the crypto users. Um, I don't know previously how it was implemented or things like that. I'll have to find a bit more on that aspect. I'll be doing that part for you, and I'll get back to you on that, guys. But as of now, what I understand is, yes, of course, there were some faulty tax rules or things like that that were in place, which they're trying to curb it, and they're trying to stop it from happening. So that is what is it leading to. Now, other than that, there's also allowing states more freedom in crypto innovation. So this is another part of this big beautiful bill that they're planning to do. So it's not the official name, though. This big beautiful bill is not the big beautiful bill. Actually, it's a basically like it's a pro crypto legislation that is being passed, and Donald Trump, like how he's named big beautiful wall, in the same way he's just trying to name this like a nickname towards this legislation, and he's presented it as a big beautiful bill. So there's no real name as big beautiful being existing into the thing, but this is what it means. So it's just like his way of when he's addressing to the people in the Senate, or he's addressing it in the White House, or talking to the people in the speeches, rallies, or anything like that. So he mentions that as a nickname out there to kind of say that what are the legislations, what are the rules, what are the new legalities or things like that he's bringing. So to sum up this whole thing and to bring about what this big beautiful bill is all about, first thing is he's trying to make US the global crypto leader in the whole crypto industry. That is what he's trying to do by bringing this big beautiful bill. The second thing is this big beautiful bill is trying to safeguard or protect the Bitcoin and the other assets. That is second thing. Third thing that is part of this bill is they're trying to ban the US CBDC, which is the central bank digital currency, which is like they're trying to put a ban on the digital dollar. That is what they're trying to do. Other than that, the fourth thing is they are trying to create some favorable tax rules for crypto users. So people who have been mishandled, misutilized, or maybe something wrong has happened to you guys against any crypto being in US, I think that is going to bring about some kind of good news to all you guys. So don't worry on that part. Now coming to the fifth point, it is like it's allowing the all the states part of US to have more freedom in crypto innovation. So these are all the clauses of the all of the big beautiful bill. Coming to now, I'm sure while past 1 hour we've been discussing about Genius Act and we've been discussing about the big beautiful bill. I'm sure you guys are able to relate to what exactly these two are and where they are heading towards. So don't you think it's a good news for all of us, like knowing the fact that there are going to be legislations, there are going to be legalities, there are going to be frameworks, there are going to be regulation against each one of them. The companies are going to be monitored, and if anybody is not going to follow that, then they're going to be penalized. In fact, not penalized, they're going to be punished for it, because once it becomes a law, then it's any avoidance of law means a punishment. It's not just penalty. It's not just fine, but we know when it becomes a law, it means that anyone who is going against that law will be punished for their wrongdoing. So, finally, our years of years of hard work, years of
so many times. I don't know. I mean, I have not been scammed for sure, but I don't know how many of you actually were scammed during all this phase of 10 years or decade, where you were scammed under any of these things where people fooled you into looting your money and things like that. So finally, the day has come through which, through Genius Act and through Big Beautiful Bill, that we're going to get that freedom of having a regulatory framework around crypto industry, so that whatever we are doing, all these things are going to be safeguarded, protected, and we will be guided by the law. So if anything goes wrong, then those bad doers, the wrongdoers, don't worry, the people are coming behind you to kind of make your life miserable. I'm not giving my personal opinion, guys. This is all in the news. This is all being discussed about. So even if you go and search it on the Google, you'll find all this information which I'm discussing. So this is nothing like I'm bringing this on my own or something. These are all the information that are like publicly available on the internet. And if you go Google research yourself, you'll find all this information. So once you just put it on the Google saying Genius Act, or you put in the search keyword like the Big Beautiful Bill, you'll get all the clauses out there, you'll get all the information out there. So that's what the news is all about. So yeah, moving on, what now I told you, we've discussed in the Genius Act also what exactly are the clauses in the Genius Act. Now coming to the Big Beautiful Bill, what is inside that bill? Basically, what are the clauses that are going to be presented in that bill is, the bill would block the US Federal Reserve from launching a central bank digital currency, which Trump says could be used for surveillance and control. So he wants the Federal Reserve to stop having the launch of central bank digital currency. So they don't want Federal Reserve to be part of all of this. So this bill will block the US Federal Reserve from doing that. So okay, that is first thing. Now second thing is Bitcoin friendly policies. So it encourages the users mining and holding of Bitcoin and other cryptocurrencies. So there is going to be proper framework around Bitcoin and the way it is going to be used, mined or held and things like that. So that is what is going to happen for the Bitcoin related thing. Then other than that, it will promote state level innovation, allowing states like Texas or Wyoming to build local crypto laws. So now what it also means is that it is encouraging at all the state levels to have, to build their own local crypto laws, so that there is state level innovation that he is promoting. And he wants them to basically have some Bitcoin friendly policies out there, so that there's proper monitoring, there's proper, care being taken on this front. And, that is how it should be moving. So this is what he proposes in that Big Beautiful Bill. So this is one of the clause of Big Beautiful Bill. Now moving on to the third aspect to it, which is part of this reform. This is part of the Beautiful Bill, is that there is a crypto tax reform that he's planning to include. So he may include capital gains tax relief on small crypto transactions, like for example under $200. If somebody is buying or selling crypto, then he might not want to have those people being taxed under capital gains or something like that. So that is what he is planning to do. So he might give a relief to the people who basically are being taxed on such small transactions. So it's a good news for all of us again, maybe the retail investors. For obviously for wholesale investors or like large institutional investors, or the big whales that we talk about, obviously you guys are of course at scrutiny or whatever you guys are, you will have your share of things that you will continue to do. But coming to the capital gains tax relief for the small retail investors, it's a good news. Of course, it's a good thing to hear. It aims to simplify the tax reporting for average users and investors, because we all know for a fact whoever is starting out in this crypto journey,
It's not an easy journey to begin with. It's of course, some of the things looks gibberish to me. Trust me, for me right now, being in this industry for quite some time, for more than like now I can say it's been more than 8 to 12 months that I'm into this industry, and I still feel some of the words like it just bounces over my head. So it's just gibberish to me, trust me. So what he aims to do is he's trying to make crypto tax reporting in a simplified manner for retail users and investors, like for small investors. So he doesn't want to complicate things for the small investors out there. So that is what he is planning to do. Now, coming to other aspects to it, there are some more things which are part of this particular bill that we need to discuss, and we will be discussing, and I will be coming back to spot trading as well. I know we are still into the news aspect of it, and I'm still covering on that part, but once I finish this news aspect of it and we finish this big beautiful bill and Genius Act and everything, I will be going towards the spot trading. So guys, in spot trading we are going to discuss few aspects about how to spot a trend reversal. This is what we've been discussing past 2 to 3 days, and I'm going to continue that topic. And you guys have to stay tuned while I take a 15 minutes break, and we will be back after a small 5 minutes to 10 minutes of break. Okay.
So, guys, I am back. I am back. So, before going on to the break, I was talking about the, you know, what's inside the bill. That is what we were talking about. So, first and foremost thing was about the CBDC that we were talking about, like, central bank's digital currency ban on the digital dollar. So that is what they are planning to do. So this bill will block the US Federal Reserve from launching the central bank digital currency. That is what it aims at. Then second thing, of course, as we talk about, it's about the Bitcoin friendly policies that they are promoting. So they want to encourage use, mining and holding of Bitcoin and other cryptocurrencies, and also promote the state level innovation, allowing the states to allowing the states to build local crypto laws. So this is second thing. Other than that, the third the third thing as part of the bill that they want to bring is the crypto tax reform, which includes capital gain taxes relief on the small cryptocurrencies, like transactions like maybe somewhere around $200 or something, which aims to and they also aims to simplify the tax reporting for average users and investors. So this is what is happening. Now coming to the stablecoin regulation, it works alongside the Genius Act to give a legal framework for private stablecoins like USDC and USDT. And on the strategic Bitcoin reserve, which is rumored as there's talk of the US holding Bitcoin in national reserves similar to gold to protect against inflation and geopolitical. So the third thing, not the third thing, the fourth thing that they also want to bring about through this beautiful bill is, like, they also want to bring about the stablecoin regulation. And they are working alongside the Genius Act to bring this legal framework for private stablecoins like USDC and USDT. So this is one more thing which is part of this. And then there is strategic Bitcoin reserve, which is being rumored about. There's a talk of the US holding Bitcoin in national reserve similar to gold to protect against inflation and geopolitical risks. So these are few clauses of the big beautiful bill that is being talked about and discussed about, and hopefully if everything goes fine, they're going to build it, implement this. So as of now in July, what the status looks like is, it's part of the bill are expected to be introduced to Congress by July 2025, and it is part of Trump's broader crypto week initiative. So between July 14th to 18th, which is also a time for the Genius Act to get passed on July 16th, that is when they plan to even look into this particular thing. So these regulations or the legislation that is being formed is backed by several Republican lawmakers and supported by many in the crypto community. So hopefully we might see some positive outcome to it. We never know what is going to happen on that front, but let's just be very, very optimistic about the way we are heading towards. So yeah, that is what it means and why it matters. For all of us, why which matters to any of us, why we should know about it is because the US, it could boost US crypto adoption massively, which is what it is all about. So it will boost US crypto adoption massively, would make it easier for businesses and users to engage in crypto. So it could boost US crypto adoption massively. So this is one thing.
which will be overall impacted, which in a way is a good news for all of us too, because the more it gets adoption, the more better it is for all of us, because the prices will tend to shoot up, the demand will increase, and vice versa, like blah blah blah, like those kind of things. Then coming to would make it easier for businesses and users to engage in crypto. This is another thing why it matters, is because it will make the businesses and users to engage much more in crypto, because it is making the framework very easy, it is making all the rules easy, it is making legislation easy, everything around easy. So that's the reason we might see that it is basically it will make the business and users to engage in crypto much more than what they were used to do. Then third thing is it puts the US in direct competition with countries like El Salvador, UAE and Singapore on crypto leadership. So right now there are so many leading countries in crypto industry. So like countries like El Salvador, UAE, Singapore and all of that, they are all leading into it. So it's going to put on par with all of them. So that is what the vision is all about. So that's how they look at it in that way. Other than that, they have also seen this as a direct reversal of anti-crypto policies under the previous administration. So this is like totally opposite of what anti-crypto policies are all about. So under Joe Biden's administration, whatever was being followed or whatever was being implemented, now it's going to be a direct reversal of anti-crypto policy. So this is what overall the big beautiful bill is about. So to summarize the whole thing in a nutshell, if I say, they're trying to put a ban on the US Federal Reserve from launching the CBDC, which is Central Bank of Digital Currency. They're trying to bring Bitcoin friendly policies related to its use, mining, holding, etc. Trying to bring about some new crypto laws that will be helpful for overall crypto industry as such. And third thing is like they are trying to bring about some crypto tax rate reforms, trying to help and safeguard the interest of the small retail investors, trying to safeguard their taxation and all of that. So they're trying to bring about capital gains tax relief, and they're aiming to simplify the tax reporting and all of that. Then fourth one is obviously stablecoin regulation that they're trying to bring, which means that they're working alongside the Genius Act. So maybe some reformations on that side to give it a legal framework for private stablecoins. So that's also part of it. And the fifth and the last thing that they're planning to do is obviously create a strategic Bitcoin reserve, where it means that the US is trying to hold Bitcoin in national reserves, like similar to gold, and trying to safeguard its position in the global markets as such. So this is what the overall summary of, or overall picture of big beautiful bill looks like. And it is basically proposed by Trump, pro-Bitcoin, anti-CBDC crypto law, aiming to protect the user privacy, boost innovation, simplify the taxes, and ban the digital dollar. And it also plans to, it's part of his plan, to make America the global capital of crypto. So this is all being discussed about. This is all being talked about. So hopefully we'll have something shaping up in the coming few days. Like July 16th is the date for the Genius Act to get implemented, while July 14th to 18th is when basically July 14th to 18th is when this big beautiful bill will also be worked alongside. So let's just see what will happen on that front, and how this is going to bring about a positive or a negative impact on the overall crypto markets. And we will be looking into all of that in the coming few days. So that, guys, all this information, whatever we were discussing past one and a half hour, was all related to the market overview, how the markets look like, what it means for Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP and whatnot, and whatever is coming in the market, whatever positive, negative is impacting the overall markets.
what the Bitcoin dominance looks like, what the ETFs inflows are all about. These are all the things that we need to know so that we make some kind of informed decisions. We make some right kind of decisions. So that's the reason I'm discussing all of this with you guys. So you have to, in order to start trading or start investing into crypto, know everything that is happening in this industry, because the more informed you are, the more educated you are in this industry, the more right kind of decisions of what you're going to make. Otherwise, you might fall victim to wrong decision making, or buy it at a hype, or maybe buy it at a wrong time where probably there seems to be no positive outlook to the market or outlook to your particular cryptocurrency, and that's when you enter the market and you might have some not so great results coming out of your investments or your trading activity as such. So this is the reason I educate you guys, because all these videos, these streams are not for investment or financial advice. These are for education and information purposes. So you have to do your own research too before you get into this industry, because crypto markets are highly volatile and you can lose out on every penny in this particular industry. So don't shell out the money which you have kept for any of your emergencies, maybe for food, rent, traveling, whatnot. Only that money which you think is just lying just like that and has got no real other value as such, like no other use as such, not real value. Sorry for the wrong word. So use that money only, and just invest that much which you think you can afford to lose, because I don't know, you might as well lose out on all the money. Trust me, as a trader myself in this industry, I have also at times gained, I have lost. So it's a combination of everything. Not every day is a heyday. So if you are a trader expecting that every day is going to give you some amount of profit, it's going to be a good day for you, it's always going to be heydays for you. No, it's not going to happen like that, because there will be days where you will be facing some kind of negative things as well. You will basically not always be profitable. So you need to adjust the things as per the requirements. So if you have to adjust the things as per requirements, all you have to do is you have to basically make sure that you don't invest at the wrong time. So invest at the wrong time, and also don't invest way too much too. That is what I can say. So yeah. Okay, now moving on. I'm going to open the BTC USDT chart for you guys, because I'm going to make some notes on the chart itself while I'm actually doing this session for you guys. So now that we have discussed enough news and market overview of whatever is happening on the overall crypto markets, let's just move on to discuss what we have to do in terms of starting our trading journey. So I'm sure any of you who join these sessions, there might be only two agendas behind joining these sessions. Either you want to be a long-term investor, where you want to take advantage of the dollar cost averaging and invest into crypto. That is what one of the agendas might be. Or the second agenda might be that you want to be a day trader, or you want to be a trader where you can make some amount of money every day on a day-to-day basis, right? So how do you begin that journey? How do you even get onto the platform? How do you decide? What do you have to do? What are the basic things you need to remember? What are the basic things you need to understand? These are few things when as a beginner trader you need to basically focus on. And in my previous streams, in a lot of sessions, I've already covered these points, but I will obviously repeat it again and again, because this is part of our overall day-to-day session, where I cater to each one of your requirements out there. I try to focus on everyone, because I know it's a combination of beginners, it's a combination of pro traders, it's a combination of investors and whatnot. So
It's very much inevitable, and I need to reiterate again and again. So I'm reiterating once again. As a beginner trader, when you're starting your spot trading, you need to first and foremost thing, remember that you need to know few of the glossaries, terms, and some jargons that you need to memorize yourself, to get acquainted with, to get familiar with, and then move on towards basically what is needed to start your trading journey. Now, first thing, to understand what the markets are all about. So the starting of the session was all about understanding the markets, where it is heading, what it looks like, how it is, planned for the day. Other than that, what other things that I do as a day trader or as an investor or a trader is, I also make sure to know what's trending in my particular crypto. Like for example, if I am trading in BTC, I would want to know everything which has happened, which is going to happen, or which is happening, like past, present, and present continuous. I want to know everything on that aspect, and then make sure that I'm making some informed decisions. This is one thing. When you start as a beginner trader, you know everything in the market, plus in addition you need to know something called as what you need to know in your particular crypto that you're dealing with. So if you are dealing in Ethereum, you need to know everything in and out of what's happening with Ethereum. So something to do with Vitalik Buterin, who is the co-founder of Ethereum. If he, even for the sake, like if he has been hospitalized, or if he has been working on a new project, like whatever is related to him, or the Ethereum as a project as such, you have to know every bit of it. That is what is the rule book, the first rule of starting your crypto journey or your spot trading journey. Now coming to the second thing, understanding which platform is the best to begin your trading journey. So all this while, I never had this answer. I was always giving you a universal answer saying that, oh, Joe, go and use Binance, or go use WazirX, or go use CoinDCX, or go use Delta Exchange. I don't know what all I was recommending. I didn't recommend as such, actually speaking. I never recommended, because I know that I don't use any of them, so I never recommend any of them. Yes, Binance, I have used it, so sometimes I used to talk about Binance, but now that Zbit is launched, I do not wish any of you to go towards either CoinDCX or towards crypto. Like you don't have to go towards WazirX, you don't have to go towards Delta Exchange or whatnot, because Zbit is there, right? So Zbit is a one-stop platform for all you guys to start your crypto journey into spot and your futures trading. So it's the most easiest user interface that you will come across. We've got, like, at the moment, very limited features, and we have just based out of two regions at the moment. We are based in we are accessible to India, and we are accessible to Nigeria at the moment. So guys, go download this app. If you haven't downloaded it, I have shared my referral code too, and also at the same time I have also shared the QR code, which you can basically scan to download it from the Play Store app itself. I am really sorry for all the iOS users. Basically, the iOS users do not have access at the moment. Probably we might see iOS downloads coming in maybe a couple of months, but at the moment we do not have iOS version of it. So sorry for all those users who basically would like to download it for iOS versions of it. Now coming to what the Zbit app is all about. Zbit app is a one-stop platform giving you 24-hour service, giving you 24-hour support in terms of customer service and everything, to kind of cater to your requirements for all your spot and your futures trading. So if you are just beginning out, or you're just a pro trader, both things are covered in this thing. All you need to do is just go register yourself. Once you register yourself, KYC yourself. KYC is that easy. Just needs your passport copy or an ID document, probably a driver's license or any other resident permit or things like that. Maybe if you're based out of some other country, you might have resident IDs or things like that. But if you're in India itself, you might not need that as well. Only passport will suffice, and that's all it takes. So passport and a phone number is good enough to start your crypto journey.
And after you get KYC registered yourself, all you have to do is deposit your fiat, not deposit your fiat, deposit, um, yeah, deposit fiat only, deposit fiat, and then get cryptocurrency in your wallet. So that is what you're supposed to do. So do that. Once you do that, and once you're done with that, then you can basically start your crypto journey. Now, I'm going to guide you step by step. Like we are going to have a dummy demo account being placed, and I'm going to create, like, have a, I'm going to create that scenario. Like I'm going to create that scene for you where basically we are trading live, and you can basically use this, what do I call, simulations? Is that the right word? I don't know. Okay. Anyways, so what I'm trying to do is I'm going to have a demo trading live with you guys, and we are going to see, take some live trades, and then discuss about various things that we are supposed to discuss, and hopefully we will be seeing some huge success on that front. So while some of the demo sessions are encouraged for all you guys not to be taken as any kind of financial advices or investment advice, at the same time I would encourage each one of you to do your own research as well. Okay, now the first and foremost thing which I was telling you guys before we begin is like how do we start our crypto journey, right? So crypto journey is basically, it can be started with, the first thing is like you need to start with the app, which is very important, and you have the app yourself. Zbit is there for you. Now the second thing is identifying the right kind of pair. Now how do you identify the right kind of pair is totally dependent on a couple of things that you need to remember. A is your risk appetite. Okay, how much risk are you able to take because of this? Are you able to take too much of risk? Are you taking moderate risk? Are you taking like okay risk? I don't know what moderate is, also okay, right? So too much risk or moderate risk, so that is what it is. So these are few things that are your questions to answer. Then second thing is, obviously, when I say that when you're starting your journey, is to obviously make sure that you are how do I say, you are choosing the right kind of pair. Now the right kind of pair can be chosen depending on a few things. Now what are the few things that you need to remember is, first thing is obviously you need to know the capital that you're ready to invest. Now as a trader myself, I'm a trader myself, so I only invest that much which I think I can afford to lose, which means that my 6 months emergency fund, which I have for my food, shelter, clothing, and all my basic essentials that I need, are set aside. And after that, if I am left out with something, is what I actually tend to invest. And that is what I'm doing right now. And I would encourage each one of you also to do the same. Do not touch anything which is your 6 months expenses or your basic need of the hour. So without food, without shelter, without medicines, without traveling, these 4 things you cannot live without it, right? So these are very essential things of your life. These cannot be compromised. Yes, I think shopping in the sense like clothing, or your say your shoes, bags, accessories, and all of that, all those can stand, or your beauty or things like that can stand, because they come under luxury, comfort, and all of that. So that's doesn't matter at all. But what matters is food, shelter, not clothing, food, shelter, travel, and medicines. These are very, very important and crucial things. So if you have set aside your 6 months balance out there, all you have to do is you have to basically start your journey
in terms of crypto. And in that also, again, it totally depends on your net worth. Now, some of you might be very, very rich. Some of you might be like middle class, like salary earners. Some of you might be people who are even below that. I don't know. Like, I don't know the status of any of you. So it all depends on what class that you belong to. So if you have a lot of money, I don't think that that would be any problem. But if you have limited money and resources, then better to make sure that you divide it in a way that basically it gives you some fruitful results. That is what I would say. So coming towards basically what you should invest, what your money should be like. That shouldn't be my answer. That can't be something that I can't answer. Like, it's not something for me to answer. So that is for you to answer. After setting aside your emergency fund, how much are you left out? And even if you lose out on that particular money, like completely, imagine a day you just lose out on all the money, then you are still able to survive or not? That is what the question is. So कीप इट इन माइंड इन अ वे के मतलब पैसा डालते ही रिटर्न्स आना शुरू नहीं होंगे, ये सोच के चलो कि अगर वो पूरा पैसा लुट गया, खत्म हो गया, तो हाउ आर यू एक्चुअली गोइंग टू सर्वाइव? सो इफ दैट इज हाउ योर मेंटालिटी विल बी, देन यू विल नो कि कितना अमाउंट आई कैन सेट इट असाइड टू बी एबल टू स्टार्ट माई जर्नी. When this question is answered, then your journey begins. And how this journey begins is by first going on to this particular platform which we have. CoinMarketCap is what I call this app. मतलब इसको मैं CoinMarketCap I'm sure, मतलब आप अगर क्रिप्टो से एसोसिएटेड हो तो CoinMarketCap आपके लिए कोई नई चीज़ तो होगी नहीं. तो ऑफ कोर्स CoinMarketCap इज एन ओल्ड थिंग फॉर ऑल यू गाइस. सो CoinMarketCap पर जाएं और यहाँ पर एक आपको चीज मिलेगी जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे दिख रही होगी. इसको कहते हैं CoinMarketCap 100 इंडेक्स. ओके, इस इंडेक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर CMC जो ये बेसिकली वेबसाइट है, इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स नजर आ जाएंगे. सो ऑल द मेजर top cryptocurrencies out here are in the CMC 100, and you can see Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, Tron, Doge, Cardano, Hyperliquid, Sui. All of them are there in this particular zone. Okay, सब के सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं. तो आपको पूरे 100 के 100 यहाँ नजर आएंगे. So this is a combination. The CMC 100 is a combination of NFTs, meme coins, some stable projects, some stable coins. व्हाट नॉट, लाइक मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है ये सब कुछ ना. तो अभी इसमें से आपके लिए क्या बेस्ट सूट करेगा? अगेन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर, नॉट मी. आई विल नेवर सजेस्ट कि भाई आप इथीरियम में डाल दो, आप सोलाना में डाल दो, आप ट्रॉन में डाल दो. आप हाँ, ऑफकोर्स मैं न्यूज दे सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, किसके प्राइस प्रेडिक्शंस अच्छे लग रहे हैं. पर वो भी सारी आफ्टर ऑल आर ऑल द न्यूज इज फ्रॉम सम रिलायबल रिसोर्स, नॉट माई ओन इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स. मतलब मैं अपने मन गढ़ंत कहानियां बोलती नहीं हूँ, और ना ही मैं अपने खुद से कहीं से अपने घर से स्टोरीज पका के लेकर नहीं आती हूँ. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं अगर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे भी दूँ ना, तो आपका काम होगा आगे चल के उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च खुद करें. और जब तक अपने दिल को तसल्ली ना हो, जब तक आपके दिल को ये पक्का नहीं पता चलता है कि दिस इज फ्रूटफुल, दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू और नॉट, मतलब ये आप जो डिसीजन ले रहे हो आपके लिए सही है कि नहीं, तब तक आप इस इंडस्ट्री में या इस पर्टिकुलर जो भी आप क्रिप्टो में आप जाना चाहते हो उसमें आप जाना भी नहीं. जब पूरे फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए तभी आप इसमें जाओगे और तभी आप अपना पैसा हार्ड एंड मनी इसके पीछे लगाओगे. कहने को तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई, CMC 100 के हिसाब से अगर फर्स्ट 10 क्रिप्टो को भी उठा लोगे तो उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिप्टो आपको एक ऐसी मिल जाएगी जो बेसिकली आपको खूब लिक्विडिटी भी देगी, खूब वॉलेटिलिटी भी देगी और आपको ठीक ठाक पैसा भी बना के देगी. That should be good enough to answer to that question. In case
अगर आप मुझसे मतलब बहुत इंसिस्ट करते हो और मुझसे पूछो तो मैं आपको एक आसानी की भाषा में बोलूँ तो आपका अगर मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो ये हो सकता है। अगर मैं आपको अपनी खुद की तरफ से आंसर ना दूं एंड आई वांट टू बेसिकली वांट यू टू जज इट, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा लो। वॉच लिस्ट में लगा के उसको हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, जितना भी आपका मन हो, जब तक आप ना 100% कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि भाई मैं अभी रेडी हूँ मार्केट में एंटर होने के लिए, तब तक उसको बस वॉच करते रहो। बस वॉच करते रहो कि भाई आज प्राइस कितना गिरा, कल कितना उठा, आज कितना गिरा, कल कितना उठा है। इतना सा आप एक एक्टिविटी कर लोगे ना तो यू विल बी थ्रू इट। एक बार आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई कितना भाव चढ़ता है उतरता है, भाव चढ़ता है उतरता है, यू विल बी थ्रू टू इट. So this is one thing that you will be doing. Now second thing is, what you will do is, after having analyzed it for couple of days, weeks together, उसको शॉर्टलिस्ट करते करते 10 से 5 पे आ जाओ, या 5 से, या फिर शुरुआती 5 से करो, 5 से 1 ही पे आ जाओ, या फिर 10 से 5 पे आ जाओ, फिर 5 से आप 1 पर आ जाओ। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप जब शुरुआत कर रहे हो तो बेटर है कि एक ही क्रिप्टो को उठाकर उसी पे आप ट्रेड करोगे तो दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू टू मेक सम ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ डे टू डे बेसिस। इतने सारे अगर कॉम्बिनेशंस उठाओगे और बेसिकली विल बी ड्राइविंग टू मेनी थिंग्स टुगेदर, यू आर गोइंग टू एंड अप लूजिंग एंड यू आर गोइंग टू एंड अप लूजिंग फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स, बिकॉज एज अ बिगनर, ओके, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जो वॉरेन बफेट कहते हैं, वो वाला फंडा इस्तेमाल करके आप उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बेसिस पे कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग बना सकते हो। जैसे मैं कल और परसों के सेशन में भी अपने बता रही थी कि लाइक यू कैन कीप इट लाइक सेक्टोरियल वाइज, यू कैन कीप इट लाइक यू नो लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो वाइल एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन ऑल ऑफ दैट। बट कमिंग टू ट्रेडिंग में एक ही सिंपल फॉर्मूला रखो, एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी रखो कि एक कॉइन पे एक ही टाइम कॉन्सेंट्रेट करो। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कंफ्यूज भी हो जाओगे, और फिर कंफ्यूज होने के अलावा फोकस लूज हो जाएगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू बेसिकली गेन एनीथिंग इन वन जोन फॉर श्योर। तो एक जोन में अगर आपको करना हो तो बेसिकली you have to keep a focus on one thing only. Just a sec. Just a sec, guys. Yeah.
Yeah. So as I was talking about, what to pick up for the crypto to start your journey. Like even if you're confused, agar aap looking at the CMC 100, what you can do is once you get onto the Zbit app, like I'll show you, just a sec. The Zbit app is here. So there are so many cryptos out here which you can pick any of them to start your trading journey. And even if this seems to be a bit of tricky to you, and you seems to be like not sure whether this is the right way to pick it up, then I have suggested you better way of doing it. And the better way of doing it is of course by basically going on to the CMC 100 and picking up any crypto which is performing well from the top 10 in the list, and then going about with starting your crypto journey. That is that easy. So I made your life easy by letting you know how you can pick up the right kind of crypto. This totally depends on the kind of money you have, the kind of capital you have, or also what you are interested in. So some of them are very very lucrative projects, some of them have like very very bright future. Some of these options that you see are very very like innovative projects, something to like revolution that we can talk about. Or some of them are definitely have a lot to offer. uh, कुछ नहीं समझ में आता है तो the last that you can do is just stick on to Bitcoin, because Bitcoin, as you know, is a digital gold that we say, or is a store of value. अगर सारे ऑप्शंस में से जो भी, अगर फॉर एग्जांपल CMC 100 में से 10 फर्स्ट 10 में से आपको चूज करने के लिए भी दिक्कत आती है, या फिर आप Zbit पर खुद जाते हो और वहां पर आपको कुछ चूज करने के लिए दिक्कत आती है, तो द लीस्ट दैट यू कैन डू, the easiest way that you can get into choosing the right kind of pair is के BTC choose कर लो और फिर अपनी journey begin कर लो. That's it. पर मैं एज अ बिगनर ट्रेडर आपको ये नहीं एनकरेज करती कि आप जाते ही उस पे अपने हार्ड एंड मनी लगाकर अपना ट्रेडिंग का जर्नी बिगिन कर लो, बिकॉज of course as a beginner trader you might need a bit of technical analysis and fundamental analysis is what is required in order to start this journey. तो जब तक आप प्रो ट्रेडर या जब तक आप थोड़ा बहुत बेसिक्स एंड the basic glossaries that you need to learn about it, until then if you don't know, then you might not be able to use these platforms so effectively or easily. तो थोड़ी बेसिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज वेरी मच नीडेड इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर जर्नी. सो आई वुड एनकरेज कि थोड़ा सा डेमो ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर लो. मे बी सबका अलग अलग लेवल होता है ऑफ लर्निंग. द लर्निंग कर्व फॉर एवरीवन इज डिफरेंट. फॉर फ्यू यू माइट लर्न इट इन say maybe just about 1 week, some of you might take months, some of you might take couple of weeks. तो सबकी जर्नी अलग होती है, तो it all totally depends on how you want to take it further. तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जैसा समझ में आता है, आप वैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट एम्फोसिस ऑन एनी वन ऑफ यू कि भाई आप मतलब ना 2 हफ्ते लर्न कर लो एंड यू विल बी थ्रू टू इट और यू विल बी अ प्रो इन इट, या 1 हफ्ता लर्न करो यू विल बी अ प्रो. नो, दैट इज समथिंग, वो अगेन आपका पर्सनल है. जैसे कैपिटल कितना आप उस पर लगाने वाले हो वो एक आपका पर्सनल डिसीजन है, या दूसरा कितना रिस्क आप लेने वाले हो या लेते हो वो एक आपका डिसीजन है. तीसरा जो है कि बेसिकली
क्या कहते हैं कि ये लर्निंग का जो कर्व है, लर्निंग कर्व में जो आप जा रहे हो, ये भी आपकी पर्सनल डिसीजन, क्योंकि सब कोई इमीडिएटली लर्न तो करता नहीं है। कोई कोई जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई कोई को बहुत टाइम लग जाता है, तो दैट इज टोटली अगेन योर पर्सनल थिंग। तो ये भी चीज़ पे मैं आपको कोई कमेंट या कोई एडवाइस नहीं दूंगी, ये आप टोटली अपनी खुद ही से डिसाइड करना हाउ यू वांट टू गो अहेड विथ इट। तो गाइज मैंने आई थिंक ओवरऑल आपकी ये जो भी सुविधा, जो भी आपकी दिक्कत है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया होगा। अभी बात करते हैं, वंस एक बार ट्रेडिंग पेयर चूज हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता यही है कि आप बेसिकली एक सही तरीके के प्लेटफॉर्म पर जाएं, और Zbit आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू स्पॉट एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो वहां पर जाकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो डिपॉजिट योर फियाट एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। तो उससे आप बेसिकली अपना क्या कहते हैं, यू कैन बेसिकली स्टार्ट योर क्रिप्टो। लेकिन मतलब ना $5, $10, $20 से भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ही डालना। हाँ, आई विल पुट लिटिल एम्फोसिस ऑन दिस पार्ट के होता ये है कि अगर अमाउंट्स छोटे होते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि कि आपका फीस जो होती है, एक्सपेंस जाने के बाद शायद आपको इमीडिएटली प्रॉफिट जल्दी जल्दी देखने को ना मिले, क्योंकि यू हैव टू मे बी वेट फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशंस ओनली, एंड शॉर्ट टर्म में आप शायद पोजीशंस में से ना पैसा निकालना आपके लिए थोड़ा काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की अपनी अपनी खुद की फीस होती है। तो वो बेसिकली निकालने के बाद आपको जो भी लेफ्ट आउट होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो वो चीज़ एक आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम आप कैसे डिसाइड करते हो कि वॉल्यूम ज़्यादा करना है कि कम, ज़्यादा करना है कम करना है। अगर कम करते हो तो ये दिक्कत आ सकती है, और ज़्यादा करते हो तो रिस्क बहुत एसोसिएटेड है। तो मतलब रिस्क इतना एसोसिएटेड है कि मतलब पूरा पैसा भी आपका इस चक्कर में लॉक हो जा सकता है या मतलब लॉस हो सकता है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आपको अपना पूरा पैसा लगा देना चाहिए या हाई वॉल्यूम्स में ट्रेड करना चाहिए। आप अपनी सोच अक्ल इस्तेमाल करें कि आपके लिए क्या बेटर सूट करेगा एंड व्हाट इज गुड फॉर यू, एंड देन यू डिसाइड ऑन इट। अभी ये हो गया अदर थिंग दैट आई टोल्ड यू के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हमारे प्लेटफॉर्म पर बेसिकली आपको 24/7 कस्टमर सर्विस मिल रही है। हमारी लाइव स्ट्रीम टीम 8 आवर्स अ डे आपके लिए अवेलेबल है एट योर डिस्पोजल। आपको जब भी कोई क्वेश्चन होगा, जब भी कोई कंप्लेन होगी, वी आर देयर जस्ट अ क्लिक अवे। आप ऐप पर जाएंगे तो भी आपको कस्टमर सर्विस 24/7 मिलेगी, या फिर आप लाइव स्ट्रीम पर जब आप क्लिक करोगे हमारे ऑफिशियल चैनल्स पे, any of us right now we have got 2 hosts, maybe there will be more couple of people joining in future, लेकिन अभी as of now there are 2 people who are there live at least minimum of 4 hours a day। तो आप 4 hours में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं to ask your questions, to clarify any doubts, to do any complain or things like that। कुछ भी अगर होगा तो आपको हमारी टीम यहाँ बैठी आपको हेल्प करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है, सो प्लीज़ गो एंड यूज़ द टेलीग्राम कम्युनिटी टू ज्वाइन द टेलीग्राम कम्युनिटी, एंड यू कैन बेसिकली बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ पर इन रिटर्न फॉर्म ऑब्वियसली दिस इज नॉट मतलब एक लाइव स्ट्रीम मतलब वीडियो नहीं होता है या फिर कोई रियल पर्सन तो बैठा हुआ नहीं है। टेलीग्राम कम्युनिटी में काफ़ी कुछ जो भी दिन भर में मार्केट में जो अपडेट्स आती हैं, जो चेंजेस होती है मार्केट में, एवरीथिंग दैट इज देयर दैट गेट्स डिस्कस्ड इन द टेलीग्राम कम्युनिटी, दैट इज व्हाट इट इज। तो बेसिकली आपको टेलीग्राम कम्युनिटी से वो सारा सपोर्ट मिल जाएगा। Our dedicated team managers, the people who are associated with Telegram community is also part of that group, so you can basically join those sessions and you can basically क्या कहते हैं ना, उसमें बेसिकली आप कुछ भी हो पूछ सकते हो और अपने मार्केट सेंटिमेंट्स और लोग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जान सकते हो कि लोग किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या डिस्कशंस चल रहे हैं कम्युनिटी में एंड ऑल ऑफ दैट। तो
या दैट इज व्हाट इज अबाउट टेलीग्राम कम्युनिटी। अभी आपको मैंने प्लेटफॉर्म दे दिया, ट्रेडिंग पेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे पिकअप करना है, क्या करना है, और फिर मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी जर्नी कैसे बिगिन करनी है। मैं इसका लाइव स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी करूंगी, मे बी इन अ डे और टू, वंस आई गेट माई डमी अकाउंट एक्टिवेटेड। मैं आपको लाइव एक्टिवेशन, रजिस्ट्रेशन, केवाईसी या फिर डिपॉजिटिंग, एवरीथिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड करके आपको मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू बेसिकली स्टार्ट दिस जर्नी दैट यू आर सपोज टू। तो डोंट वरी ऑन दैट एस्पेक्ट, we are there 24/7 to guide you at every step, so we will have you covered on that aspect. Now coming towards स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा तरीका है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ही, यानी आप जब वर्ड सुनते हो तो आपको समझ आ ही जाता होगा कि स्पॉट ट्रेडिंग मतलब ऑन द स्पॉट जो भी ट्रेडिंग की जाती है विदाउट हैविंग टू इन्वॉल्व लाइक एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू फ्यूचर, दैट इज व्हाट द स्पॉट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। यानी उस समय पे बेसिकली जो भी ऑन द स्पॉट बाई एंड सेल किया जाता है उसको स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। तो स्पॉट ट्रेडिंग में होता ये है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो टॉप CMC 100 के जो भी क्रिप्टोज है, ये जो भी प्राइजेस इसके आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे बिटकॉइन अभी 108,608 पे दिखा रहा है। तो अगर आपको इसी प्राइस पे राइट नाउ बिटकॉइन को खरीदना हो तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, यानी ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पर जो भी प्राइस नजर आता है वो मार्केट प्राइस पे आप जो खरीदते हो, दैट इज योर स्पॉट ट्रेडिंग एंड दैट इज हाउ यू प्लेस द मार्केट ऑर्डर। इस प्राइस पे जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको मार्केट ऑर्डर कहते हैं। अगर in case you think that the price is going to either go up or down or whatever is your speculation about the price prediction, तो उसके बेसिस पे अगर आप सोचते हो कि फॉर एग्जाम्पल के बिटकॉइन 108 की जगह 107 हो जाएगा, दिस इज वॉट योर स्पेक्यूलेशन इज, तो आप एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे। वो लिमिट ऑर्डर आप प्लेस करोगे 107 पे, अज्यूमिंग के जब प्राइस 108 से 107 की तरफ नीचे गिरेगा तब आप अपना परचेजिंग करोगे। यानी आप मार्केट प्राइस पे खरीद नहीं रहे हो, आप खरीद रहे हो एक लिमिट ऑर्डर पे, जब प्राइस वो नीचे की तरफ शूट करेगा तब आप अपनी बाइंग करोगे। अभी वंस यू बाय इट बेसिकली नेक्स्ट ये होगा कि आपको इसमें दो अगेन एक ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन ये होगा, फर्स्ट ऑप्शन ये होगा कि आपको प्रॉफिट किस लेवल पे निकालना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको लॉस अगर होता है, क्योंकि नॉट एवरी डे इज अ हे डे जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने पे निकालना है, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस कितने पे निकालना है। यूजुअली अगेन लॉस और प्रॉफिट का ये एक सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल है। ये आपकी खुद की मर्जी है, ये खुद का डिसीजन है कि आपको whether you want to basically remove it at 5%, 10%, 15%, 20%, मार्केट कितनी मार्केट उठ रही है, कितनी मार्केट गिर रही है, उसके बेसिस पे आप कितना प्रॉफिट या कितना लॉस लेने की कैपेसिटी रखते हो, ये टोटली सब्जेक्टिव टू यू है। बट अगर आप डायरेक्ट एक आंसर जानना चाहते हो तो मैं बोलूँगी कि भाई 1 से 2%, 1 से 5% मैक्स होता है, बट 5% भी कभी कभी अगर अमाउंट आपकी बड़ी हो तो 5% बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इसका मैं आंसर आपको कॉन्क्रीटली ये नहीं कह सकती कि भाई 5% ही रख लो, लेकिन जो एक रेंज होती है, चाहे वो छोटा अमाउंट हो कि बड़ा अमाउंट हो, 1 से 5% से ज़्यादा का लॉस कभी भी आपको ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। अगर आपने एक गलत डिसीजन बना लिया, यू एंटर्ड इनटू द मार्केट एट अ प्राइस वेयर द प्राइस शूटेड फर्दर डाउन आफ्टर इट, तो 1 से 5% के बीच में अगर मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट, बिकॉज आगे उसके बियॉन्ड अगर आप रुकोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और हो सकता है कि आपको काफ़ी वक्त रुकना पड़ जाए
वो पैसे को रिकवर करने के लिए। ये हो सकता है कि बेसिकली मनी फंस जाए और फिर आपको मिलने के चांसेस कम हो जाए। तो मैं ये कहूँगी कि यू शुडंट बी ब्लॉकिंग द मनी इन दैट सिनेरियो। अगर रोज़ के रोज़ ज़्यादा मतलब एज अ बिगनर ट्रेडर एक $5-10 भी बन जाते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू टू स्टार्ट योर क्रिप्टो जर्नी। दैट इज़ हाउ इट शुड बी बेसिकली। तो या this is what I have to say, and other than that क्या अभी, हाँ, तो मैं आपको टेक प्रॉफिट के बारे में भी बता रही थी और टेक लॉस के बारे में। तो टेक प्रॉफिट भी अगेन सब्जेक्टिव टू आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि 1% पे मार्केट जब पहुंची, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया आपके एक्सपेंसेस निकालने के बाद, यानी ट्रेडिंग फीस वगैरह निकालने या टैक्सेस वगैरह निकालने के बाद, या फिर आपकी से कि आपकी प्रॉफिट ठीक ठाक 2% की मार्केट पे या 4%, सबका अपना अपना होता है यार लेवल। तो जहाँ पे भी आपको लगता है वहाँ पे टेक प्रॉफिट करें और निकाल दें। और लॉस का जैसे मैंने बोला 1 से 5% से ज़्यादा आपको मूव होना नहीं चाहिए। मार्केट अगर उससे ज़्यादा को शूट करती है तो फिर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और उसको रिकवर करने के लिए शायद टाइम लग जाए। शॉर्ट टर्म पुल बैक होता है तो मार्केट रिकवर हो ही जाती है, बट अगर लॉन्ग टर्म अगर रिवर्सल, लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म में वो बेसिकली आगे बढ़ रही है तो वो बेसिकली लॉन्ग टर्म में वो पुल बैक हो गई है, यानी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन वगैरह हो गया, तो फिर उसमें दिक्कत आपकी आ सकती है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें और आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी आपको लेनी हो वो अकॉर्डिंग टू योर appetite, risk appetite, and whatever you think is right for you, you do that and take the right kind of decision. Okay, now moving on. ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। ये 4 चीजें स्पॉट मार्केट में आपको काफी देखने को मिलेगी और यही फंडे पर, इसी फाउंडेशन पर आपकी स्पॉट ट्रेडिंग होती है। ये 4 चीजें अगर आप बहुत अच्छी तरीके से जान लोगे, यू विल बी लाइक थ्रू टू इट। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम ट्रेडिंग। यस, ऑफ कोर्स कोई चीजें होती हैं जो बेसिकली मार्केट में होती हैं जिस पर आपका टोटली कंट्रोल नहीं होता है। और वो क्या चीजें होती है, वो डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स जो हम, जिसको हम न्यूज कहते हैं। जैसे सडनली कहीं पर वॉर ब्रेकआउट हो गया, सडनली कहीं पर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, जैसे सुनामी आ गई, जैसे कोई एयर क्रैश हो गया था परसों। एयर क्रैश से शायद काफी उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन द क्रिप्टो मार्केट्स एज अ होल। रीजन बीइंग क्योंकि वो एयर इंडस्ट्री यानी एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो शायद प्राइजेस ऑफ एविएशन इंडस्ट्री माइट बी हैम्पर्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और अ स्मॉल पुल बैक माइट बी सीन, पर ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट्स पे शायद उसका उतना असर ना हो। लेकिन जैसे अगर कोई मेजर इम्पैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, यानी सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, जिससे मेजरली काफी कुछ जगह पर और लोगों को नुकसान हुआ है या प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है, जिससे द इकोनॉमीज हैव गॉट इफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी बेसिकली अ मेजर रीजन फॉर अस टू वॉच आउट, बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल मार्केट्स एज सच। छोटी छोटी बातें हो, छोटे छोटे इंसिडेंट्स इधर उधर आपको सुनने को मिलते हैं कि भाई इंडिया के एक ऐसे छोटे से इलाके में एक छोटा सा ऐसा एक इंसिडेंट हो गया, वो हो गया, ये हो गया, इससे आपकी क्रिप्टो मार्केट पे उतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मेजर चीज़ें होती हैं जैसे ग्लोबल इकोनॉमीज पे अगर रिसेशन चल रहा हो, इन्फ्लेशन चल रहा हो, प्राइसेस की कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ा दी गई हो, टैरिफ्स इम्पोज कर दिए गए हों, टैरिफ्स रिमूव कर दिए गए हों, या फिर से के रेट कट हुआ है या रेट कट की जगह ऑपोजिट रेट इंक्रीज हुआ है, लाइक इंटरेस्ट रेट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सारी चीज़ें मेजरली बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू द फेडरल
क्या कहते हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसीज और द ग्लोबल इकोनॉमीज एज सच, तो वो आपकी क्रिप्टो मार्केट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स पे कंप्लीटली इम्पैक्ट कर सकती है। और रहा सवाल, द अदर एस्पेक्ट टू इट इज द जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि वॉर हो गया, यानी कोई दो कंट्रियों में कोई ट्रेड वॉर चल रही है, यूएस चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, या यूएस यूके की ट्रेड वॉर चल रही है, या यूएस यूरोपियन यूनियन, मतलब कोई भी कंट्री का कुछ भी कोई पंगा चल रहा हो, तो फिर बेसिकली क्रिप्टो मार्केट्स पे उसका काफी असर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी आपको जानना काफी जरूरी है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू वुड हैव टू पुट फोकस ऑन एंड टू लर्न एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। तो इसीलिए इसी वजह से तो ही मैं आपको ये सारी न्यूज देती रहती हूँ, सारी इंफॉर्मेशन देती रहती हूँ, कि आप इसको सबको जान लो कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट कहाँ मूव हो रही है, मार्केट का फ्यूचर क्या दिख रहा है, क्या प्राइस प्रेडिक्शंस है, बिटकॉइन किधर हेड कर रही है, बिटकॉइन इज इट गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी साइड, इज इट गोइंग नेगेटिव, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अदर देन दैट अभी और क्या बाकी रह गया? मैंने सारी बेसिक ग्लॉसरी तो कवर्ड कर दी है। हाँ, दूसरा चीज़ होती है, आप जब आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको चार्ट पैटर्न्स, क्या कहते हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज टोटली बिलीव्ड। एक बिगनर ट्रेडर को अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो ये सिंपल सी लॉजिक के बाई लो एंड सेल हाई का ही फंडा है। लेकिन बाई लो कैसे बाई लो, मतलब बाई लो कैन बी एनी लो, मतलब आपके हिसाब से बाई लो कैन बी, जैसे 108,608 है तो बाई लो कैन बी और 108,500 में भी। मेरा बाई लो हो सकता है 108,400 में भी, किसी और का XYZ का बाई लो हो सकता है 107 में भी, मतलब सबके अलग अलग लोज हो सकते हैं, राइट। तो एक्चुअल बाई लो क्या है और एक्चुअली बाई लो किस प्राइस पे करने से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स बन सकते हैं, ये हमको सीखना है। और यही चीजें हम आपको इन सेशंस में बताते हैं कि मार्केट को दो तरीके से आप देख सकते हो, या तो एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, या तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको डे टू डे बेसिस में मार्केट की जो भी प्राइस एक्शन होती है, जो भी हरकतें होती हैं, उसको वॉच करते हुए बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, मतलब बहुत सारे स्क्रीन्स को वॉच करते हुए, बहुत सारे कैंडल स्टिक्स, पैटर्न्स, चार्ट सबको देखते हुए आपको अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा ऑन अ डे टू डे बेसिस, और शायद उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा ऑन अ डे टू डे बेसिस, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी कि भाई मतलब पैसा लगा दिया आपने और आप बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू लाइक कीप अ टैब ऑन इट एवरी नाउ एंड देन। कभी कभी होता है कि 5 मिनट्स की कैंडल में ही आपको ट्रेड कंप्लीट हो जाता है और आप बेसिकली अपना क्या कहते हैं ना, आप अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो। कभी होता है कि आपको घंटों घंटों समय बीत जाता है मार्केट में। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि मार्केट में मतलब दिन दिन भी गुजर जाते हैं, महीने महीने भी गुजर जाते हैं। तो हर किस्म का दिन मैंने देखा हुआ है, लाइक ऑब्वियसली एज अ ट्रेडर फ्रॉम 5 मिनट्स टू 15 days टू लाइक getting money stuck for like months together and all of that। तो ये बहुत कॉमन चीज है, इसको देख के पैनिक ना हो, इसको देख के घबराओ नहीं। जब आप बिगिन करोगे तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग एंड यू विल बी going through each of this cycle, like if I have gone through, you will also go through the same cycle and it's not something मतलब ये कोई क्या कहते हैं ना, it's not something new, it's not something to worry about। You can basically be assured कि ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। कोई दिन होंगे जिस दिन आपको 5 मिनट में प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिन होंगे जहाँ पे आपको 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, कोई दिन होंगे जहाँ पर आपको 8-8 घंटे बैठना पड़ेगा अपने स्क्रीन के सामने, तो तब जाके आपको प्रॉफिट्स होंगे। कोई दिन होंगे जहाँ पे शायद 10-15 दिन लग जाए, कोई दिन होंगे चाहे जहाँ पे महीनों गुजर जाए। तो ये क्रिप्टो की जर्नी के साथ एसोसिएटेड है। अब ऐसे में
जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए स्टक होते हैं, उस पीरियड के लिए स्टक ना हो, उन चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है एज अ बिगनर, कि क्या चीज़ होती है जो आपका पैसा बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए स्टक कर दे सकती है, या फिर आपका पैसा इजीली शॉर्ट टर्म में रिकवर नहीं हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नाउ कमिंग टू जो मैं अभी आपको कह रही थी कि लॉन्ग टर्म में स्टक हो जाता है, तो मार्केट में दो तीन किस्म की चीजें हैं जो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करनी है. एक होता है टेम्पररी रिवर्सल, मतलब टेम्पररी एक पुल बैक होता है, वॉट एवर, जैसे जैसे अभी बिटकॉइन ने रिसेंट पास में 112 का ऑल टाइम हाई बनाया था. ओके, एट दैट पॉइंट इन टाइम बिटकॉइन बेसिकली रीच्ड 112. तो 112 पे मतलब जिन जिन लोगों ने शायद जब वो 60,000 70,000 पे भी गई थी, जिन जिन लोगों ने खरीदा होगा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि 60-70,000 पे ही खरीदा होगा, काफी लोगों ने 100K पे भी खरीदा होगा, काफी लोगों ने 98K पे भी खरीदा होगा, 97, आई डोंट नो लाइक व्हाट प्राइसेस दे वुड हैव बॉट. तो जिन जिन लोगों ने जो जो प्राइस लेवल पे खरीदा होगा, जब वो 112 पे रीच कर गई होगी तो सबने बेचना शुरू किया. एंड द मोमेंट दे स्टार्ट सेलिंग, ऑब्वियसली द सेलिंग प्रेशर जो है ना वीक होने लगा, सॉरी सेलिंग प्रेशर हाई होने लगा, बाइंग प्रेशर कम होने लगा. तो बेसिकली अभी बिटकॉइन बेसिकली नीचे आने लगे, और नीचे आते आते अभी ये रिसेंट पास में अगेन 100 के नीचे भी हिट कर चुकी थी. तो दिस इज व्हाट द साइकिल वी हैव सीन. तो एक होता है जहां पे मतलब क्रिप्टो करेंसी ने ऑल टाइम हाई टच करते हुए नीचे की तरफ वो लाइक स्मॉल रिवर्सल की तरफ बढ़ जाती है, यानी स्मॉल पुल बैक की तरफ बढ़ जाती है. दूसरा होता है कि वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में भी जा सकती है. स्मॉल पुल बैक होता है तो फिर अगेन सबको प्रॉफिट्स देने के बाद वो वापस से अगर बाइंग प्रेशर वापस से बना लेती है तो शायद वापस से हाइप आपको देखने को फिर से मिल जाए, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल. अगर वो नहीं होता है तो फिर द बाइंग प्रेशर डजंट बिल्ड अप दैट ग्रेट द वे इट वाज, तो फिर हो सकता है कि अगर वो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चला जाए तो फिर प्राइसेस को थोड़ा सा रिकवर होने के लिए टाइम लगता है. अब अगर मैं लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन की बात करूं तो अगेन उसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं. कंसोलिडेशन यानी कुछ कुछ फेजेस होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जहां पे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी शायद घंटों में, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक दिन में अगर 6 से 8 घंटा अगर मार्केट साइडवेज की तरफ जा रही है, यानी सिर्फ एक ही लेवल पे बस आजू बाजू जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हाट हैपेंस इज कि वो उस कंसोलिडेशन फेज से यानी 6 to 8 आवर्स के फेज से वो निकल के वापस से या तो ऊपर चले जाएगी या तो नीचे चले जाएगी, कुछ तो कुछ एक ट्रेंड बना ही लेगी. वो हो गया सबसे छोटा वाला शॉर्ट टर्म वाला रिवर्सल, सॉरी शॉर्ट टर्म वाला कंसोलिडेशन. अब एक होता है एक मीडियम टाइप का कंसोलिडेशन. जो मीडियम कंसोलिडेशन होता है उसमें ये होता है कि शायद मार्केट बेसिकली एक 10-15 दिन के लिए काफ़ी नीचे गिर गई और फिर 10-15 दिन के बाद वापस से उठ गई. ऐसे रिसेंट पास्ट में इन द मंथ ऑफ आई थिंक अप्रैल या मई में, आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, सोलाना के साथ ऐसा हुआ था, जहाँ पे सोलाना बेसिकली ऑलमोस्ट 138 को हिट करके इट वेंट डाउन टिल ऑलमोस्ट कितना नीचे गिरी थी वो, आई थिंक इट वेंट डाउन टिल इवन 70-80 समथिंग लाइक दैट. तो फिर लेकिन वो 80 से 70-80 से फिर अगेन इट पुल्ड बैक टिल राइट नाउ अभी देखो फिर 152 पे भी चल रही है, मतलब उसने वापस से रिकवरी ले ली, बट वो रिकवरी अराउंड 15 से 20 दिन में मैक्स हो गई थी. तो वो हो गया मीडियम टर्म कंसोलिडेशन एज वी टॉक अबाउट. तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है फॉर फॉर द मीडियम टर्म कंसोलिडेशन. अब एक होता है जो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के लिए जाती है. तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में मतलब उसने काफ़ी कुछ ऑल टाइम हाई हिट कर दिया और अब वो बेसिकली सबको प्रॉफिट देकर अभी वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नीचे गिर के अंडर वैल्यू हो गई है, डी वैल्यू हो गई है, वो जो भी है, और फिर अभी उसको वापस रिकवर होने के लिए टाइम लग रहा है. अब वो रिकवर होने के लिए टाइम क्यों लग रहा है इज वन ऑफ द वेरी वेरी क्रूशियल क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ देयर कुड बी मेजर थिंग्स बिहाइंड दिस. एक होता है कि यानी मार्केट में इतना ज़्यादा बवाल मच गया है, यानी सो मच हैज हैपेंड इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ से के कैसे बताऊँ मैं,
यानी नेगेटिव न्यूज़ हो गए, जैसे अब हमने रिसेंट पास में देखा कि ईरान इसराइल का वॉर हो गया, उससे पहले यूक्रेन का कुछ वॉर चल रहा था गाजा से रिलेटेड, ये वो मतलब। और फिर और क्या मैं बताऊं, कुछ मतलब जियोपॉलिटिकल थिंग्स या जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जो नेगेटिवली मार्केट को बहुत कुछ इम्पैक्ट कर गई, वो सारी चीज़ों ने उसको होल्ड बैक कर लिया। तो बिटकॉइन में हमने देखा कि काफ़ी लाइक सर्च देखने को मिला, 112 रीच कर गई उस दिन, जिस दिन बेसिकली सम नाइस लाइक गुड न्यूज़ केम इन द मार्केट। और फिर अगेन कुछ टैरिफ्स इम्पोज हुए या कुछ वॉर छिड़ गया, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं मतलब कितने कितने इवेंट्स तो हुए हैं। तो वो सब हुआ तो फिर बेसिकली वो नीचे की तरफ बढ़ गई। तो ये शॉर्ट टर्म पुल बैक्स और लाइक लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं ना, लाइक शॉर्ट टर्म पुल बैक, फिर वो वापस रिकवर हो जाना एंड ऑल दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन योर क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो ये एक हो जाता है। दूसरा, अभी अगर मैं सुई की तरफ जाऊं, जैसे सुई एज अ क्रिप्टो की तरफ जाऊं, तो सुई में बेसिकली एक मेजर हैक हुआ था। इनफैक्ट इथीरियम में भी एक हैक हुआ था इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। इथीरियम में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ था, इसमें तो खैर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हुआ है। फिर भी इथीरियम बिकॉज उसका डोमिनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है एंड बिकॉज इट हैज़ गुड ग्रेट मार्केट कैपिटलाइजेशन एज वेल एंड इट हैज़ ग्रेट अडॉप्टेबिलिटी एज वेल एज यूज केस एंड ऑल ऑफ दैट। तो मतलब वो हैक होने के बाद भी स्टिल पीपल हैड फेथ इन इट, कॉन्फिडेंस इन इट एंड इट स्टिल रिकवर्ड वेरी क्विकली ऑन दैट एस्पेक्ट, राइट। लेकिन कमिंग टू सुई में हैक हुआ। हालांकि न्यूज़ में ये भी पता चला था कि 160 मिलियन आउट ऑफ 240 मिलियन समथिंग रिकवर भी हो गए, लेकिन फिर भी उसको आज भी आप देखो, जब उसने $4 4.1 आई थिंक 4.1 वॉज द हाई, राइट, रिसेंट हाई। उसका ऑल टाइम हाई तो $5 के अबव है जो जनवरी में हुआ था, लेकिन रिसेंट में $4 4.1 के आसपास गई थी। तो उसके बाद वो रिकवर होने के लिए काफ़ी समय लगा रही, काफ़ी टाइम लगा रही है, राइट। तो उसके तो मेजर रीजन ऑफकोर्स जो दूसरे क्रिप्टोज को अफेक्ट कर रहे हैं वो तो उसके साथ एसोसिएटेड हैं ही, जो कि बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लाइक the geopolitical tensions, the tariffs, or basically what we say about कौन सा, मैं किसके बारे में, हाँ कौन सा, हाँ वो वाला ना, यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गए या फिर आसपास में जो भी चीज़ें थी टैरिफ्स को लेके, मॉनेटरी पॉलिसी, वो तो इफेक्ट कर ही रहे थे। अदर देन दैट, क्योंकि some of the altcoins are also alternatively they get impacted because of बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस होती है तो कोई कोई कॉइन्स ऐसे होते हैं कि बिटकॉइन जैसा उठता है तो वो भी उठते हैं, जो अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है तो वो भी गिरते हैं। तो सुई के साथ समवेयर ऐसा कनेक्शन है जहां पर बिटकॉइन जैसे ऊपर जाता है तो सुई में भी कुछ अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इट्स अ इनएविटेबल अंडरस्टैंडिंग के बिटकॉइन को एक सेफ हैवन एसेट के मायनों में माना जाता है कि बिकॉज इट हैज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इट इज़ देयर फॉर द लॉन्ग रन एंड ऑल ऑफ दैट। तो लोगों को अगर बिटकॉइन के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है तो फिर वो लोग ऑल्ट कॉइन्स में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं। वेराज अगर सबको बिटकॉइन के अंदर कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ नजर आता है तो ऑल्ट कॉइन्स में से भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी आउटफ्लोज हो रही है, राइट। इट विल नॉट बी द सेम फॉर इट। तो यही होता है बिटवीन द बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन रिसेंट पास्ट में भी। जैसे अगर जैसे कल या परसों में बिटकॉइन काफ़ी अच्छा जा रही थी ना, 109 की तरफ भी चली गई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस समय पे बेसिकली आपने देखा होगा सुई भी बहुत अच्छे करस्पॉन्ड कर रही थी उस दिन ना। इट ऑलमोस्ट रीच लाइक टिल $3 3.08 तक शायद वो गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारे ऑल्ट कॉइन्स भी इम्पैक्टेड नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं। कौन इम्पैक्टेड होता है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और स्पेशली अगर जैसे BTC को खरीदने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव कॉइन इस्तेमाल की जाती हो, जैसे BTC ETH एक
ट्रेडिंग पेयर है। बीटीसी के साथ जो भी एक ट्रेडिंग पेयर होता है, अगर बीटीसी के प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है तो वो ट्रेडिंग पेयर के भी प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कोई कोई लोग होते हैं जो बीटीसी को खुद यूज करते हैं टू बाय अनदर क्रिप्टो करेंसीज, तो अगर उस स्टेबल कॉइन या उस करेंसी पर फर्क पड़ रहा है तो फिर बीटीसी पे भी उसका फर्क पड़ेगा। तो ये एक बेसिकली ग्लोब लाइक क्या कहते हैं, it's an inevitable understanding that we need to have, and you need to understand that this is where it gets impacted, overall. So I hope this, until now, whatever we've discussed, whatever we are talking about is actually making some sense to you, and you are able to understand what we are trying to talk here. So this is overall about the spot trading markets, what you need to look for, consolidations क्या होते हैं, major reversal pullbacks क्या होते हैं। अब ऐसे में एक और एक चीज़ होती है जो बेसिकली जिसको हम रिवर्सल के नाम से जानते हैं, और रिवर्सल एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली आपको जब भी आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रिवर्सल के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, आपको रिवर्सल के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं ट्रेड करना है। अक्सर होता यह है कि एज अ बिगनर ट्रेडर ऑल ऑफ अस मिस आउट ऑन द राइट काइंड ऑफ साइंस और पॉइंट्स, जहाँ पे हम बेसिकली ये मिस कर देते हैं कि ट्रेंड तो रिवर्स होने वाला था, लेकिन हमने ऐसे गलत पॉइंट पे एंट्री ले ली कि बेसिकली मतलब पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, और फिर बाद में हम उसको पछताते हैं, यार काश मैंने ये वाली चीज़ को नोटिस कर ली होती, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, अगड़म बगड़म, सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो कमिंग टू एज आई सेड कि द वे इट हैज़ टू बी performed, or it is performing is you need to basically make sure कि आप ना अपना क्या कहते हैं राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। मेरे साथ खुद एक पर्सनल हादसा हुआ है, मतलब मेरे साथ खुद होता है, हो रहा है, होता है कि समटाइम्स मैं सारी डिलीजेंस से ट्रेड भी करूँ ना, एट टाइम्स आई ऑल्सो मिस आउट ऑन थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आप लोग से बात करते करते मैं अगर ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड लेने से पहले गलती से मैंने अगर न्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, या उसमें क्या हो रहा है, मतलब आसपास में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको थोड़ा सा भी अगर मैं मिसप्लेस कर दूँ और फिर मैंने गलती से एक ट्रेड लगा दिया, तो अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ आने की वजह से मार्केट गिर जाती है, सडनली क्रैश कर जाती है फॉर वट एवर रीज़न, तो ऐसे में बहुत ऑब्वियसली नुकसान झेलना पड़ता है, और फिर ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको डिलीजेंट भी होना पड़ता है। दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल इज के मिस्टेक्स इनएविटेबल है गाइज। इनिशियली बिगनर ट्रेडर आप होंगे तो गलतियां तो होती हैं, गलतियां होंगी, लेकिन वो गलतियां बार बार ना दोहराई जाए, उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाउ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हाउ डू यू स्पॉट द रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड। कभी जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में आप ट्रेड कर रहे होंगे और आपने देखा होगा कि मार्केट बेसिकली ऊपर जाती हुई नज़र आ रही थी फॉर सम टाइम। मे बी अगर आपने 3 मिनट्स का कैंडल चार्ट लगा लिया हो और आप पिछले आधे 1 घंटे से देख रहे हो कि ओके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप सडनली जाकर आपको लगता है कि भाई चलो मैं इस उठती हुई मार्केट में मैं भी पैसा लगा के कुछ पैसे बना लूँ करके। पर होता ये है कि आप जैसे ही पैसा लगाते हो आप सडनली देखते हो कि मतलब मार्केट ने नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी आप सोचते हो यार शिट ये क्या हो गया कि मैंने तो लगाया था कि पैसा मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा था और मैंने लगा दिया कि ऊपर ही जाएगी, लेकिन ये तो नीचे जा रही है। तो ये एक बहुत गंदी सिचुएशन होती है और मेरे साथ भी
हुई है, आई एम श्योर आप सबके साथ भी हुई होगी, हर एक ट्रेडर के साथ होती है ये। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे शायद बच पाया हो। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे वो बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, वेल्स का तो पता नहीं, खैर कोई तो जो जिसने शुरुआत की होगी उसने डेफिनेटली ये वाला सिनारियो पक्का पक्का फेस किया होगा। तो ये चीज़ इनएविटेबल है भाई, मतलब यू कांट एस्केप आउट ऑफ इट। तो अगर आपने ये सब कुछ बेयर किया है तो बेसिकली यू नॉट अलोन इन दिस, वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस। तो हम लोग सब इस वाली जर्नी के मतलब वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। तो या तो कमिंग टू व्हाट आई वाज सेइंग कि रिवर्सल स्पॉट करना एक बहुत बड़ी टेक्निक है, एक बहुत बड़ी स्किल है। नॉट एवरीबडी कैन डू इट एंड नॉट एवरी वन विल बी प्रोफिशिएंट इनफ टू डू इट। और रिवर्सल स्पॉट करना इनिशियली एज अ बिगनर ट्रेडर शायद आपको करना आए भी ना, ये भी पॉसिबल है, बिकॉज ये ऑल दिस थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा इसके पीछे ना मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ती है। यानी आपको डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर, डिफरेंट इंडिकेटर्स, सारी चीज़ें आपको यूज़ करते हुए आपको इसको ना यूज़ करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट इमेजिन कि मतलब एक ट्रेडिंग व्यू का एक पैनल आपने खोल लिया और आपको इमीडिएटली रिवर्सल मतलब ऐसे चुटकी में दिख जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट दैट लाइक दैट कि ये कप ऑफ टी नहीं है, ये कप ऑफ केक नहीं है। इसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी और वो स्किल्ड आई, वो डिटेल्ड आई, काफ़ी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स देयर आर की टूल्स, इंडिकेटर्स, थिंग्स लाइक दैट जो आप जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स ले सकते हो। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेड्स लेने से पहले भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जो बेसिकली अभी मैंने मतलब हाफ द टॉपिक भी नहीं कवर किया है। रिवर्सल तो बहुत दूर की बात है। पहली जो चीज़ होती है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होता है वो है, मैं आपको बता रही थी कि व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू गाइज, मैं टोटली डिविएट हो गई टॉपिक से। आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्राइस आउट देयर, के प्राइस बाई लो सेल हाई। तो ये तो सबको नॉर्मल फंडा तो पता है, लेकिन कौन सा बाई लो, कौन सा बाई लो इज व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन, राइट। तो अगर मैं बिटकॉइन की 10 इयर्स की एनालिसिस करने बैठ जाऊं ना, तो फिर मैं तो मतलब आई एम गोइंग टू गो क्रेजी, मतलब मैं पागल हो जाने वाली हूँ 10 साल की एनालिसिस करते करते कि भाई ये महीने में कितना गया था, वो महीने में कितना गया, उसने कितना ट्रेड किया, मतलब कितना परसेंट ऊपर हुआ, कितना परसेंट नीचे गिरा। ये करते करते तो मतलब पूरी आधी उम्र ही निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है। अभी अगर इसको इजी भाषा में और एक आसानी के तरीके से अगर मैं इसको समराइज करूँ ना, तो मैंने अपने एक प्रीवियस सेशन में, जैसे आई हैव मेड अ सेशन जस्ट अबाउट 2 to 3 days अगो, जहाँ पे मैंने I have talked about NVT, जो कि नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने बात किया है। नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट, जैसे स्टॉक मार्केट में पीई रेशियो होता है, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है, जो आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन के जो भी स्टॉक प्राइस आप देख रहे हो ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इज इट अंडर वैल्यूड, इज इट फेयर वैल्यूड और इज इट ओवर वैल्यूड। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटरमाइन कर देती है कि स्टॉक को, मतलब आप जब स्टॉक खरीदना चाहते हो तो वो प्राइस जो आप देख रहे हो वो प्राइस अंडर वैल्यू है कि फेयर वैल्यू है कि या ओवर वैल्यूड है। अगर ओवर वैल्यूड है यानी आप ऑलरेडी एक्सपेंसिव उसमें प्राइस पे खरीद रहे हो। अगर फेयर वैल्यू होता है या अंडर वैल्यू होता है तो वो आपकी राइट काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लेकिन अगर इन केस आप गलती से आपने अगर उसको डिटरमाइन नहीं किया या सही तरीके से आपने उसको डिटरमाइन नहीं किया, तो फिर हो सकता है कि आपने ओवर वैल्यू प्राइस पे खरीद लिया और फिर उसमें आपको बड़ी
दिक्कत आ सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो गया पीई रेशियो। लेकिन ये पीई रेशियो बेसिकली स्टॉक सॉरी क्या कहते हैं क्रिप्टो की मार्केट से इसका थोड़ा सा एसोसिएशन कम हो जाता है। रीज़न बीइंग क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स ये खुद एक करेंसीज हैं, ये बेसिकली स्टेबल कॉइन्स है, ये टोकन्स हैं। तो इसमें नॉट नेसेसरी कि जैसे स्टॉक मार्केट में जैसे आपको नेट इनकम या आप उसमें कंपनीज का आप नेट इनकम देख सकते हो, इबिडा देख सकते हो, लाइक यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। वैसा हो सकता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में वो सब कुछ ऑप्शन ना मिले। ऐसे में आप करेंगे क्या? तो द only tool or mechanism that you can follow is usually what traders or investors would like to do is to find out the network value to transaction, जिसको नॉर्मल वैल्यू में NVTV कहा जाता है। एक होता है फुली डाइल्यूटेड वैल्यू FDV, आपने सुना होगा। एक होता है TVL, टोटल वैल्यू लॉग्ड। टोटल वैल्यू लॉग्ड को बेसिकली इन नॉर्मल अगर मैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर इसको कंपेयर करूं तो TVL इज नथिंग बट AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो बेसिकली कितने एसेट्स हैं अंडर द मैनेजमेंट, यानी वो कंपनी के अंडर कितना सप्लाई अवेलेबल है जो ट्रेड हो रहा है, वो बेसिकली आपको उसकी पिक्चर देता है। तो TVL इज नथिंग बट योर assets under management. तो when you look at your TVL for that crypto के assets under management कितने हैं, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये पर्टिकुलर क्रिप्टो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी जितनी सप्लाई अवेलेबल है उसमें से कितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। उससे एक आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसका सच में यूज़ अडॉप्शन केस कैसा है और रियली इसकी डिमांड है कि भी या नहीं है, ये आपको एक अंदाज़ा लग जाता है। अभी NVT अगर हम कैलकुलेट करें तो NVT बेसिकली विल कैलकुलेट योर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इट विल बेसिकली कैलकुलेट योर जस्ट अ सेक, मैं आपको एक उसका फॉर्मूला बोलती हूँ, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है वो। सो NVT में बेसिकली हाँ, तो मैं जैसे बता रही थी मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, जो कि ट्रेड हो रही है ऑन एनी एक्सचेंज। अगर आप उसको एक्सचेंज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉइन मार्केट पे आके आप अब देखोगे कि डेली में 24 आवर्स वॉल्यूम उसका कितना ट्रेड हो रहा है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय दैट इफ़ यू डू, तो आपको एक NVT का रेशियो मिल जाता है। और वो NVT के रेशियो के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा है या ओवर परफॉर्म कर रहा है या फेयरली परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें बेसिकली अगर आपने जो भी कैलकुलेशन किया, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपने किया, तो आपको जब जो भी इसका डिनोमिनेटर आता है, जो भी इसका आंसर आता है, वो आंसर अगर लेस देन 20 हुआ तो यानी वो बेसिकली अंडर वैल्यू है। अगर वो नॉर्मल होता है, यानी नॉर्मल रेंज ये होता है कि 20 से ज़्यादा और 50 से कम, तो बेसिकली वो फेयर वैल्यू होता है। और अगर वो 50 से बढ़ के हो तो फिर वो ओवर वैल्यूड प्राइस है। तो नॉर्मल रेंज जो है ना वो 20 से 50 के बीच में आती है। तो अगर आपको वो डिनोमिनेटर 20 to 50 के बीच में आ रहा है तो यानी वो नॉर्मल प्राइस में यानी फेयर वैल्यू पे है, तो आपको उस प्राइस पे खरीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको स्टिल और बड़ी लॉन्ग टर्म पोजीशन का फ़ायदा उठाना हो तो बेटर होगा कि आप जब वो लो वाली कैटेगरी में, यानी वो अंडर वैल्यू पे हो, यानी लेस देन 20 पे हो, तब आप खरीदोगे तो दैट विल बी दी एक्सेलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ के रखो और दैट शुड बी गुड इनफ फॉर यू टू मेक दैट राइट काइंड ऑफ डिसीजन। अगर आपने ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली। अब होता ये है कि
थोड़ा सा ऑल्सो आपको मूविंग एवरेजेस वगैरह भी देखने पड़ेंगे, मे बी 90 डेज का, 50 डेज का, 20 डेज का, कुछ कुछ तो आपको इसका थोड़ा सा और फर्दर निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पिछले 20 दिन में वो प्राइस कहाँ है, 50 दिन में किधर है, 90 डेज में। तो एक आपको मोटा मोटी एक 20 डेज का, 90 डेज का, 50 डेज का अलग से एक आपको एक इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा कि प्राइस किस रेंज में अप एंड डाउन हो रही है। तो उसके हिसाब से फिर आप अपना एक एस्टिमेशन डाल सकते हो कि मैं किस प्राइस पे, मतलब बीच के कौन से प्राइस पे मैं अपना बाई पोजीशन रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है यार, बहुत ट्रिकी चीज़ है, ट्रस्ट मी, नॉट एट ऑल इजी। स्पेशली चलो मैं ये मान सकती हूँ कि भाई जब क्रिप्टो नई आती है तो फिर उसको कोई नई क्रिप्टो हो या प्रोजेक्ट ज़्यादा पुराना नहीं हो तो बहुत आसान हो जाता है 1-2 साल की एनालिसिस करके उसके बेसिस पे कोई चीज़ कंक्लूड करना। लेकिन अगर किसी क्रिप्टो ने ऑलरेडी बहुत टाइम से स्टेबलाइज कर लिया, जैसे बिटकॉइन हो गया, 10 साल से ज़्यादा उसने अभी स्टेबलाइज कर लिया, 15 साल हो गए, तो अभी ऐसे वाले क्रिप्टोज को एनालाइज करना बहुत बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत चैलेंजिंग अफेयर है। नो डाउट, आई टोटली गेट इट एंड आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट पोजीशंस यू गाइज मस्ट बी। आई एम टोटली विथ यू। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है और आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। बाइंग प्राइस जब एक बार सही डिटरमाइन कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। स्काई इज द लिमिट इज व्हाट आई कैन से। बट एक बार गलत बाइंग पोजीशन भी लेनी ना तो फिर प्राइस पैसे अगर एक बार अटक गए मतलब अटक गए। तो यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू एंटर, हाउ टू एंटर एंड ऑल ऑफ दैट। तो कोई भी क्रिप्टो 2-4 साल पुराना प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ना मूविंग एवरेजेस के हिसाब से प्राइस निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। पर वो जैसे बिटकॉइन हो गया जिसने 10-15 साल से प्राइस बहुत स्टेबलाइज कर लिया, तो उसमें बाइंग पोजीशन निकालना आई टोटली अंडरस्टैंड एंड गेट इट एंड इट्स नॉट सो ईजी एज वेल। तो अभी आपको क्या सूट करता है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आप सही राइट काइंड ऑफ प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो टू एंटर इनटू द मार्केट, तो आप बिटकॉइन या बहुत पुराने वाले प्रोजेक्ट्स में जाना। नहीं तो थोड़े बहुत पुराने, जैसे मैं जिसमें डील करती हूँ, सुई हो गया जो 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है, तो मुझे थोड़ा सा उसको एनालाइज करने और उसकी प्राइस प्रेडिक्शंस करने के लिए और उसके एनालिसिस करने में मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आपको वैसे भी पिक करना हो तो यू कैन चूज दैट। आई एम नॉट saying there is anything right or wrong, but all you have to do is you have to do your own research, my guys. Like guys, इसमें कोई माफ़ी नहीं है। आई नो कोई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मतलब 10 साल की एनालिसिस करनी होगी, 15 साल की एनालिसिस करनी होगी, लेकिन करनी होगी गाइस, वरना आप एक गलत फैसला कर लोगे और अपना पैसा स्टक कर लोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको रिकवर करने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने उसको उस समय खरीदा होगा जब वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हुई होगी, आपने वो रियलाइज़ नहीं किया होगा, आपने सोचा हाँ ये तो मतलब ओके है प्राइस, यहाँ से प्राइस बढ़ना है करके आप गलती से ओवर वैल्यू पे खरीद लेते हो और फिर वो स्टक अप हो जाता है हमेशा के लिए, तो फिर वो एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड के आप ओवर वैल्यू पे नहीं अंडर वैल्यू पे कर रहे हो। अगर मैं चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स के बेसिस पे अगर इसको बात करूं तो एक ये होता है कि इंडिकेटर्स के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो RSI इंडिकेटर अगर मैं यूज़ कर लूँगी तो RSI को अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज करके मैं अगर उसको यूज़ करूँगी तो बेसिकली आई विल बी एबल टू गेट सम एंट्री पॉइंट। पर वो एंट्री पॉइंट नॉट नेसेसरी इसको डिटरमाइन करती है कि आपने ओवरऑल सही डिसीजन लिया है, यानी एंट्री पॉइंट तो बन जाएगी, लेकिन क्योंकि मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल है, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट 24 आवर्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में 100% के भाई यहाँ से पॉजिटिव ही होगी करके आपने जो भी पोजीशन ले ली होगी उसकी कोई गारंटी नहीं बनती। हाँ, लेकिन अगर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे
कंपेयर करने के बाद लाइक फाइंडिंग आउट द मूविंग एवरेजेस और कैलकुलेटिंग एनवीटी एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद अगर आपको एक कोई एवरेज किस्म का कोई सही प्राइस मिलता है तो उसके बेसिस पे कोई ट्रेड ले रहे हो तो शायद चांसेस 50-50, अगेन उसमें भी 50-50 चांसेस है, कोई ऐसी गारंटी तो है नहीं। तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा ये टोटली डिपेंड करेगा, और फिर कैसे होगा क्या होगा ये मतलब टोटली डिपेंड करता है। आरएसआई इंडिकेटर बेसिकली क्या कर सकता है आपके लिए कि आरएसआई अगर आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे लगाया और आपने देखा कि आरएसआई बिलो 30 चला गया ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, यानी 3 मिनट्स का लगाया, 1 मिनट का लगाया, 5 मिनट्स का लगाया, या फिर 15 मिनट का लगाया, 45 मिनट्स का भी लगाया, 1 आवर का भी लगाया, हर एक टाइम फ्रेम लगाया और हर एक टाइम फ्रेम पे वो लेस देन 30 पे चला गया, यानी ऑलमोस्ट वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, यानी इतनी ज़्यादा बेचना हो गया है। व्हाट इज़ द वर्ड? बिकाई, आई थिंक बिकाई इज़ द राइट वर्ड। तो वो हो गई। तो अभी आपको पता है कि भाई मतलब प्राइस उसकी लोवेस्ट कैटेगरी पे आ चुका है, यानी लोवेस्ट पे आ गया, पर लोवेस्ट कैटेगरी पे आ तो गया है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि उस लोवेस्ट कैटेगरी पे आने के बाद वो फर्दर और डाउन नहीं जा सकता? ये अगेन इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50-50 क्वेश्चन। तो ये वाला सवाल का जो आपके पास जवाब नहीं होता है, इसी को तो हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी सही हो सकती है और किस जगह पे बाइंग करने से लाइक आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल सकते हो। तो एक बार आपको चस्का लग जाएगा ना कहाँ पे प्रॉफिट निकालना है और कहाँ पे मतलब बाइंग का एक आपने पोजीशन बना लिया, फिर उसके बाद आपने प्रॉफिट थोड़ा सा बना लिया, तो उसके बाद देयर इज नो एंडिंग टू इट। मतलब एक बार चस्का लग गया मतलब, बट ट्रस्ट मी गाइज, प्रॉफिट बनता भी है तो फिर बाद में लॉस भी होता है। तो ये सब कुछ जुड़ी हैं चीज़ें। मैंने आपको बहुत क्लियरली इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन भी बताया कि कभी प्रॉफिट होता है तो 5 मिनट में भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट होता है तो 3 घंटे में भी हो जाता है, कभी प्रॉफिट होता है तो 8 घंटे में होता है, कभी दिन गुजर जाते, कभी कभी महीने गुजर जाते। तो ये सारी चीज़ें एक एज अ ट्रेडर यू विल हैव टू गो थ्रू। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बिगिन योर जर्नी। सो दैट इज़ what I have from my end. So we've almost finished 3 hours session right now, guys. तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, टू रिआइट्रेट, टू समराइज, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में थोड़ी सी मार्केट ओवरव्यू की, आपको कंप्लीट न्यूज़ की तरफ मैं लेके गई, क्या क्या चीज़ें किन किन क्रिप्टोज को कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस, दैट वाज वन thing that we talked about. Second thing is, of course, what we talked about is the Genius Act bill and the big beautiful bill that we talked about. तो ये 2 चीज़ों पे भी हमने थोड़ी सी एम्फेसिस डाली है और हमने उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा कंपैरिजन किया. अदर देन दैट वी आर नाउ लुकिंग इनटू स्पॉट ट्रेडिंग, विच इज़ द टॉपिक फॉर द डे. एंड स्पॉट ट्रेडिंग के बेसिक्स ऑफ ग्लॉसरीज, मतलब बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, उसकी बेसिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजी से लेके हम पूरी एडवांस लेवल तक उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बीच में डिस्कस किए, कंसोलिडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, कैसे ट्रेडिंग पेयर्स को उठानी है, कौन सा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, एंड ऑल ऑफ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द वे लॉन्ग. अभी हम लोग वी आर सीइंग हाउ टू डिटरमाइन द राइट काइंड ऑफ प्राइस, विच इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शंस, एनवीटी रेशियो, जो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं. और फिर हम लोग we will still discuss few more things on NVT, because NVT is a very large topic. It can't be discussed just in couple of minutes. I will have to take you through some notes also on it to be able to understand it much more deeper and all of that. And other than that, what we're going to also see is how to spot the reversal of the trend. So usually whenever you enter the market, आप कभी भी देखते हो कि मार्केट में एकदम से आप
पॉजिटिव चलते चलते आप मार्केट में एंटर हो जाते हो और फिर सडनली आप देखते हो कि वो नेगेटिव हो गई। तो ये जो भी रिवर्सल्स होते हैं जिसको आप स्पॉट इनिशियली नहीं कर पाए हो, वो कैसे आप स्पॉट करके एक सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हो, दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो hold on for maybe a couple of minutes as I'll be back from a small break. I've been talking non-stop past one and a half hour, I guess. So let's just continue talking after one hour. So hopefully we'll discuss all these topics coming forward. After a small break, I will be discussing about it, guys. Tomorrow being my off, I will not be available tomorrow, but I'll be seeing you guys on Wednesday, hopefully between the same time, 4 to 8 p.m. Dubai time. So if you haven't followed me as yet and you think anything that we're talking about here is making any sense, please do like, subscribe either on our Zbit YouTube channel or on our Zbit X account and all of that. तो फिर हम लोग connected रहेंगे on whatever platform you want. Okay, so let's just connect once I come back from the break. Thank you so much, guys.
So, guys, I am back. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि Zbit प्लेटफॉर्म अभी लाइव हो चुका है ऑन प्ले स्टोर एंड इट इज़ अवेलेबल इन 2 regions राइट नाउ. So we are available in Nigeria and based out of India. तो इसकी processing is very easy. You can get onto Zbit platform, download it either through the QR code that I have already shared on the screen, या फिर मेरे registration link को आप use करके, मेरा referral code use करके इसके ऊपर आप registration कर सकते हैं. To reiterate, it's an easy process. आपको सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट या फिर अपना एक आईडी प्रूफ देना है, या फिर आप एक ड्राइवर्स लाइसेंस दे सकते हो. वेरी इजी प्रोसेस. वंस यू रजिस्टर KYC योरसेल्फ एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद अस. तो ऑल दिस वाइल द क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट के मतलब कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करें इन ऑर्डर टू स्टार्ट द क्रिप्टो जर्नी, राइट. तो अभी आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास सपोर्ट भी है, आपके पास सारी वो चीजें अवेलेबल है जो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकती है. तो प्लीज यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म एज मच एज यू कैन so that you can start your crypto journey easily, and you can begin it with too much of ease. So guys, don't miss out on this opportunity. गुड अच्छे कैंपेन्स भी चल रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर. गुड मार्केटिंग कैंपेन्स एज वेल एज सम गुड bug hunting events and lotteries and all of that. तो उसका भी हिस्सा बने ताकि आपको जो है सो तो प्लीज यूटिलाइज दिस.
So, like I was telling you, okay, there is this network value to ratio. So, network value to transaction ratio that we need to find out. जैसे PE होता है स्टॉक मार्केट में, वैसे NBT रेशियो होता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता ही है कि करंट प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई से आपको बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाती है, और डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बेसिकली टोटल USD वैल्यू ऑफ ऑन चेन ट्रांजैक्शन ओवर 24 आवर्स, वो आपको डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स भी दे सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन आप बेसिकली ग्लास नोड, कॉइन मेट्रिक्स या क्रिप्टोकॉन्ट के थ्रू डिराइव कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर जो भी आपका इसका आंसर आता है वो अगर लेस देन 20 होता है तो वो अंडर वैल्यूड प्राइस होता है, और अगर 20 से 50 के बीच में रेंज करता है तो वो फेयर वैल्यू होता है, और 50 के अबव हो तो ओवर वैल्यूड होता है। तो हाई एनबीटी कैन ऑल्सो मीन दैट इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग रादर दैन ट्रांजैक्टिंग सो ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेजेस। सो द कॉन्टेक्स्ट मैटर्स इन दिस सिनेरियो। तो ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, नॉट इंटरनल ट्रांसफर्स। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एनबीटी कैलकुलेशंस के बेसिस पे आप प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो इन ऑर्डर टू नो व्हाट प्राइस यू शुड एंटर एंड ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू हाउ यू कैन स्पॉट द रिवर्सल्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अभी जो फिलहाल यहाँ पे हमें BTC में देखने को मिल रहा है, ये तो मतलब 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, तो अभी मुझे ये बेसिकली अप ट्रेंड होते हुए नज़र आ रहा है। आई डोंट नो। तो अगर मैं इसको ब्रश पे ओपन करूँ, अप ट्रेंड हो गया ये, ओके, और डाउन ट्रेंड हो गया ये, और ये हो गया आपका साइडवेज, साइड ट्रेंड, साइडवेज। तो 3 किस्म के ट्रेंड्स होते हैं। ये वाला जो ट्रेंड होता है बेसिकली ये नो सिचुएशन है जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही छोटे लेवल पे जिसमें गुजरती है 0.51% के आसपास ये मार्केट गुजरती है, और इसमें आपको मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। साइडवेज जब मार्केट होती है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, तो यहाँ पे देखो मार्केट बेसिकली ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये मार्केट में आपको क्या ही पैसा बनेगा, राइट। देखो ये अगर मैं मेजर कर लूँ इसको यहाँ से यहाँ तक, ये 0.39% की भी मार्केट नहीं है, तो 0.39 में क्या ही बनेगा, राइट। अगर हाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन 0.39 से कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट जब एटलीस्ट 1% की उठती है या घटती है तो मार्केट में कुछ फ़ायदा देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक का मूव बेसिकली 0.59, ये भी बहुत छोटा ही है मूव, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सिग्निफिकेंट मूव है, पर ठीक ठाक ही है ये मूव भी ना। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स, अगर वॉल्यूम ठीक ठाक हो तो प्रॉफिट बनने के चांसेस होते हैं, नहीं तो फिर इसमें भी आपको चांसेस नहीं बनेंगे। हाँ, मार्केट जैसे यहाँ पहुँच गई है, 1% की मार्केट हो गई है या 2% की या 3% की मार्केट हो गई है, तो ऐसे वाली मार्केट में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और काफ़ी प्रॉफिट भी बनेगा, और फिर इसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छा सा पोजीशन भी मिलती है, और फिर आपको लंबा रुकने के लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। तो अभी जैसे साइडवेज की बात करो, तो साइडवेज में जैसे मैंने बोला कि साइडवेज में कोई आपको प्रॉफिटेबिलिटी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। पैसा आपको बनाना हो तो पैसा आपको ये अपवर्ड ट्रेंड में ही बन सकता है, इसी ट्रेंड में आपको पैसा बन सकता है। अब ये आइडेंटिफाई करना कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ ही जाएगा और यहाँ नहीं जाएगा, ये है हमारी सबसे बड़ी परीक्षा, जो बेसिकली वी हैव टू नो। अगर आपने सपोज यहाँ पर कहीं एंट्रेंस ले ली गलती से, वो प्राइस यहाँ से ऊंचा होके फिर यहाँ तक गिर गया, तो फिर मतलब आपकी तो लग गई, राइट। आपको तो बहुत बुरी तरीके से आपकी बैंड बज गई, यानी तो ऐसा आप
हम लोग के साथ अक्सर होता है और हम सबके साथ, मैंने भी ये चीज़ झेली हुई है, आप भी झेले होंगे। आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस वुड हैव सफर्ड, इंक्लूडिंग मी, यू एंड एवरीवन। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसमें ये एक इनएविटेबल चीज़ है और ये होती रहती है और ये होगी भी। ये इसको मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है। एज एन इनिशियल इन्वेस्टर और अ ट्रेडर सबको ये फेस से गुजरना है, अंटिल अनलेस यू बिकम अ वेरी प्रो इन आइडेंटिफाइंग के भाई कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, कौन सा सिग्नल क्या सिग्नल दे रहा है एंड ऑल दैट, तब तक आप नहीं वो कर सकते। मेरे कुछ तरीके हैं और सब अपने अपने अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग तरीके होते हैं टू आइडेंटिफाई द रिवर्सेस। कोई आरएसआई का इस्तेमाल करता है, कोई एमएससीडी का इस्तेमाल करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करता है, कोई मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता है, कोई वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है, कोई जो है ना डबल टॉप डबल हाइज मतलब डबल टॉप बनते हैं या लोअर हाइज बनते हैं तो वो उसका इस्तेमाल करता है। मतलब देयर आर डिफरेंट वेज। पर कोई भी ये जो भी मैंने जितने भी नाम लिए हैं इन सब को आपको अगर आपके लिए कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है करके आपको एनालाइज करना हो तो यू हैव टू बेसिकली ऑब्वियसली बैक टेस्ट देम एंड टेस्ट देम फॉर क्वाइट सम टाइम टू मेक श्योर कि आपके लिए कौन सी वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी। हो सकता है कि एक बार में आपने कुछ चीज ट्राई की हो और वो वर्कआउट कर भी जाए, नॉट नेसेसरी कि वो नेक्स्ट टाइम वर्कआउट करे। तो इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग काफी जरूरी होती है। एक कपल ऑफ टाइम्स आप उसको एक बार टेस्ट करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। While all the traders, including me and influencers, can give you all the good bad pictures of हमारे लिए क्या वर्क किया नहीं किया, हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं, पर नॉट नेसेसरी कि आपके लिए भी वो सारी चीजें काम करें, राइट। तो आपको देखना है कि इन सारे टूल्स, इन सारे इंडिकेटर्स, इन सारे चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है और कौन से सिनारियों में वो कौन सी चीज़ फिट हो रही है ताकि आप राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। तो पहला तो जो मेन चैलेंज था वो था कि किस प्राइस पे खरीदना है, व्हाट इज द बाइंग पोजीशन। मैंने आपको एक आसानी की तरीके से आपको बता दिया। अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है तो मैं एक सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करती हूँ जो कि आप भी शायद कर सकते हो। 5 डेज का मूविंग एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाय 5 करो और आपको जो भी फिगर आएगा वो फिगर आपका पॉइंट ऑफ एंट्री बन सकता है। यानी उसको एक रेंज में फिट कर लो। नाउ दैट रेंज इज टोटली योर्स के मतलब उसको कितना लंबा खींचना है, उसको कितना छोटा करना है, वो आपकी मर्जी है। और आप 5 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से अपनी एक एंट्री पॉइंट एक एवरेज रखकर आप बना सकते हो कि भाई जैसे कंटिन्यूसली 5 दिन से अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 108 या 107 के बीच में अप एंड डाउन हो रही है तो आपने अपना एवरेज कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में कहीं रखना है ताकि आप लॉन्ग पोजीशन लेकर मतलब कम से कम प्राइस पे लेकर आप अच्छे से लंबा सा ना अपना पोजीशन निकाल पाओ। तो ये एक नॉर्मल तरीका है। अदर देन दैट जैसे मैंने आपको बोला एनवीटी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो अगर इन केस आपको एक सेकेंड डाउट आता है या थॉट आता है कि शायद मैं जो मूविंग एवरेज निकाल कर अपना पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एनवीटी उसका निकाल के देखेंगे वेदर दैट price what you are trying to buy it at is an undervalued price or is it overvalued or is it fair valued। अगर इसका आपको अंदाजा हो जाएगा तो फिर आप अपनी रेंज किस लेवल पे रखनी हो वो थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपको फिर भी डाउट आता है कि स्टिल आप शायद सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा अमाउंट एक साथ ट्रेड ना करें या इन्वेस्ट ना करें। बेटर टेक एडवांटेज ऑफ द डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट एंड डिवाइड योर मनी इनटू डिफरेंट लॉट्स ताकि डिफरेंट टाइम जोन्स का टाइम फ्रेम्स का आप फायदा उठाते हुए जैसे जैसे प्राइस फर्दर गिरते जाता है, जैसे आज अगर ये वीक में प्राइस 108 पे ट्रेड कर रहा है तो नेक्स्ट वीक अगर वो 107
107 पे ट्रेड कर रहा है तो आप नेक्स्ट वाली ट्रेड अपनी 107 पे ले सकते हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे आप अपना एक एवरेजिंग कर सकते हो। उससे आपका जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका आपका कॉस्ट एवरेज आउट हो जाएगा, जिससे आपके बेसिकली जो भी आपने हाईएस्ट पॉइंट पे आपने खरीदा हो उसका लॉस आपको, जो सबसे नीचे पे खरीदा हो उससे आपको मोस्ट प्रोबेबली रिकवर हो जाना चाहिए। इन मोस्ट केसेस ये पॉसिबल है। कभी कभी अगर मतलब जैसे कोई क्रिप्टो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में चली जाती है तो फिर मुश्किल होता है कभी कभी टू रिकवर इट इन अ वेरी शॉर्टर फेज। इट माइट टेक सम टाइम बट येस इट इज़ पॉसिबल। तो जिस क्रिप्टो में मार्केट लिक्विडिटी अच्छी हो, जिस क्रिप्टो में बेसिकली वॉलिटिलिटी अच्छी हो और वो इन नियर फ्यूचर कोई लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में नहीं जाने वाली, तो वो आपके लिए सही टाइप की क्रिप्टो होती है। यानी लिक्विडिटी में बेसिकली नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स शुड बी गुड इनफ। यानी आप जब बाई करना चाहते हो और आप जब सेल करना चाहते हो आपको इमीडिएटली बाई या सेल करने का ऑप्शन मिले। अगर आपने बाई किया और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि बेसिकली शायद मार्केट में इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं है, तो बेसिकली योर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर माइट बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मार्केट में इक्वल या बैलेंस टाइप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होनी चाहिए, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम आप उसको डिस्कार्ड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है जब आप अपना ट्रेडिंग पेयर भी पिक कर रहे हो। तो ट्रेडिंग पेयर में सिर्फ कौन सा प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, या किस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा दम है, या किस प्रोजेक्ट में कितनी वॉलिटिलिटी है, या किस प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा फायदा फ्यूचर है, वो सब देखना नहीं है। प्रोजेक्ट में ये भी देखना है कि वेदर उस प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए इनफ बायर्स एंड सेलर्स हैं या नहीं, यानी प्रॉपर लिक्विडिटी है या नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड प्लीज़ मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी, एंड इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड व्हाट इज़ लिक्विडिटी, लेट मी प्ले अ स्मॉल वीडियो फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी हियर। मैं ये वीडियो प्ले करना चाहती हूँ आप लोग के साथ। In cryptocurrency, liquidity refers to how easily... Imagine trying to sell an ice cream on a hot day. If everyone wants one, you'll have no trouble. That's market liquidity. In cryptocurrency, liquidity refers to how easily assets can be bought or sold without affecting the price. High liquidity means more buyers and sellers, leading to better prices. For instance, Bitcoin generally has higher liquidity than a lesser-known altcoin, because more traders are active. Understanding liquidity allows investors to time their trades better and avoid slippage, which can cost real money. Next time you're ready to dive into a trade, remember, the smoother the market, the smoother your investment journey. Imagine trying to sell an ice cream on a hot day. I hope this video was good enough to understand कि liquidity होती क्या है, क्योंकि कोई भी मार्केट में अगर इनफ बायर्स या सेलर्स नहीं होंगे तो फिर आपको उसमें बाई एंड सेल करने की बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ना आप इमीडिएटली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाओगे, ना ही आप इमीडिएटली एग्जिट कर पाओगे, ना ही एंटर कर पाओगे। तो जो भी क्रिप्टो आप चूज करते हो इमीडिएटली, लाइक एज एन बिगनर ट्रेडर, इट्स इम्पॉर्टेंट यू चूज समथिंग विच हैज़ गुड लिक्विडिटी। यानी कोई होते हैं क्रिप्टोज जो जहाँ पे मेजर वेल्स का इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे किसी वेल ने कोई बाई किया प्रोडक्ट, मतलब यानी क्रिप्टो को फॉर एग्जांपल, तो उसके बाई या उसके सेल से काफ़ी प्राइस पे इफेक्ट होने लगता है। तो ऐसे वाले क्रिप्टोज को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। यानी वेल के मूवमेंट से सारी प्राइजेस फ्लक्चुएट ऑन एंड ऑफ होने लग जाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है तो प्राइजेस
मतलब सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर इक्वल होता है तो वॉलेटिलिटी भी ठीक ठाक देखने को मिलती है और फिर आपको भी ठीक ठाक उस उन पोजीशंस का फायदा लेने का मौका मिल जाता है. तो बी यू नो लाइक स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग व्हाट सूट्स यू बेस्ट. थोड़े लोगों के लिए शायद पहला वाला सिनारियो काम करे, थोड़े लोगों के लिए शायद मैंने जो दूसरा वाला सिनारियो बोला वो वाला काम करे. तो ऑल इट रिक्वायर्स इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सिनारियो आपके लिए बेस्ट फिट हो रहा है, राइट. तो दैट इज व्हाट इज नीडेड. तो इन थोड़ी कॉन्सेप्ट्स को समझ जाने से लाइफ बिकम्स अ बिट इजियर एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. एक मिनट. सो गाइस, अभी आपने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आज 4 आवर्स के सेशन में कितने ही न्यू चीज़ें आपने सुनी. आपने I mean you would have come across for the first time. I know it's not easy. मैं जैसे आपको बता रही हूँ या मैं आपको जो भी बोल रही हूँ, आपको भी खुद का रिसर्च करना पड़ेगा. आपको भी खुद की अपनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे. नॉट जस्ट गो बाय व्हाट इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग और व्हाट पीपल आर सेइंग एंड डिसाइड ऑन व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. तो बेसिकली आपके लिए जो भी बेस्ट वर्क करेगा उसमें से आप चूज कर सकते हो एंड दैट इज़ हाउ यू कैन डिसाइड ऑन टू व्हाट नीड्स टू बी डन. तो आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी कुछ बातें हो गई है, काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गए हैं रिगार्डिंग व्हाट मोर यू नीड टू नो is what we will discuss tomorrow. I know I was not able to cover that topic. रिवर्सल को मैं थोड़ा सा अगर मोटा मोटी भाषा में मैं इसको और डीप में कल जाऊंगी, पर अभी इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए मैं अगर आपको समझाऊं कि रिवर्सल स्पॉट करने के लिए वेरियस टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आप रिवर्सल स्पॉट कर सकते हैं. लेकिन इसको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही आप सीख सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इमीडिएटली जैसे ही आप मार्केट में एंटर करोगे आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख लोगे या इमीडिएटली आपको ये सब चीज़ें आ जाएगी. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. इट टेक सम टाइम एंड इट टेक सम स्किल्स टू बेसिकली डेवलप एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट. तो अभी मैं जैसे बोलूँ कि वेरियस ways through which you can spot reversals is of course break of the moving average, support and resistance breaks, volume spikes, double topper lower highs, या फिर other than that RSI हो गया या MACD हो गया, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, एनगल्फिंग कैंडल्स होते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको देखनी पड़ती है, देखना होता है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि रिवर्सल आने वाला है या नहीं आने वाला है. सबसे इजी और जो मुझे बहुत आसानी से जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो है थोड़े कुछ इंडिकेटर्स जो मैं यूजुअली नॉर्मली यूज़ करती हूँ. RSI, MACD ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड ऑल्सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट. ये और एक इंडिकेटर, ये 2-3 इंडिकेटर्स मेरे लिए बहुत लाइफ को इजी कर देते हैं. तो आपके लिए भी शायद इजी कर दें. मैं एज वी गो अबाउट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम एंड मे बी एनी ऑफ देम कैन बी द बेस्ट methodology out of all of the things that we are discussing. RSI पे जैसे मैंने आपको बताया कि लेस देन 30 होता है तो फिर आपको मतलब वहाँ से एंट्री पॉइंट बन जाती है. और अगर मैं MACD की बात करूँ तो MACD अगर जीरो लाइन के नीचे होता है तो बेसिकली वो बेरिश टेरिटरी में है. फिर उसके बाद बेरिश टेरिटरी से वो ऊपर की तरफ अगर बढ़ेगा तो जीरो लाइन के ऊपर जाएगा, तो फिर बुलिश टेरिटरी में वो पहुंच रहा है तो उस वक्त आपकी अगेन पॉइंट ऑफ एंट्री बन जाती है. तीसरा है फिबोनाची. फिबोनाची में डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिस लेवल तक बेसिकली प्राइस रिट्रेस हो सकता है, यानी 76.8% तक प्राइस रिट्रेस हो सकता है या 61.8 तक भी प्राइस रिट्रेस हो सकता है. अगर वो प्राइस 61.8 या 0.5 तक हिट कर लेता है और उसके फर्दर नीचे चला जाता है
तो वहाँ से चांसेस बहुत कम होते हैं कि प्राइस रिट्रेस करेगा, वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक अभी शायद मेरे बताने पे आपको क्लियरली समझ नहीं आ पा रही होगी, बट वी विल डू दिस लाइव with each indicator, with each particular topic that we are talking about. ये एक एक एस्पेक्ट को हम इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे ऑन द लाइव चार्ट, यानी जैसे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके हम देखेंगे, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे लाइव। फिर जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने ऑलरेडी टेस्ट किया है कल, फिर भी हम एक बार और टेस्ट करेंगे। वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के हम एक बार टेस्ट करेंगे। डबल टॉप और लोअर हाइज को हम टेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई, आरएसआई हो गया, फिबोनाची हो गया, या फिर एमएससीडी, ये सारी चीज़ों को हम बैक टेस्टिंग करते जाएंगे ऑन द लाइव चार्ट, सो दैट वी कम टू अ राइट काइंड ऑफ कंक्लूजन, एंड व्हाट्स बेस्ट सूटिंग फॉर अस इज व्हाट वी विल बी डिसाइडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग द की इंडिकेटर्स विच आई पर्टिकुलरली यूज वाइल ट्रेडिंग, जो आपके भी शायद काम आ सकते हैं टू मेक अ सक्सेसफुल ट्रेड। तो वो भी आप लोग टेस्टिंग करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके बाद उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। गाइज, आई एम रीआइट्रेटिंग वंस अगेन, इंडिकेटर्स भी एक मैनमेड टूल है, तो उसकी कोई 100% की एक्यूरेसी तो होती नहीं है। ये बेसिकली सिर्फ आपको इंडिकेशन देते हैं कि आगे फ्यूचर उसका क्या नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कोई बात की गारंटी नहीं होती है कि इंडिकेटर तो शायद आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता भी दे, लेकिन जैसे जो हमारे आसपास के ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल चीज़ें हो गई या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, वो चीज़ों पर इंडिकेटर का कोई क्या कहते हैं ना, कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो आप इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली लेकर नहीं चल सकते। अगर इन केस बिकॉज ऑफ एनी जियोपॉलिटिकल फैक्टर और एनी मॉनेटरी पॉलिसी और एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट दैट हैज कॉज्ड द डाउनफॉल ऑफ द मार्केट और द क्रैश ऑफ द मार्केट, इंडिकेटर्स वो आपको 100% एक्यूरेसी से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इंडिकेटर्स आर जस्ट इंडिकेटर्स, और उसको आप 100% एक्यूरेसी से लेके नहीं चल सकते। आपको मार्केट में आसपास में क्या चल रहा है, उस क्रिप्टो में क्या चल रहा है, कोई हैक हुआ है, कुछ स्कैम हुआ है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तभी आप इसमें बेसिकली अपना राइट काइंड ऑफ पोजीशन ले सकते हो, और फिर राइट काइंड ऑफ एग्जिट भी ले सकते हो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड, एंड आई होप all these things whatever we've discussed has made some sense to you, and if in case it did, please do forward these links, share, subscribe, like on our YouTube channel as well as on the X platform that we are, and also make sure you download the Zbit app, which is available at your disposal right now with 24/7 customer service at your hand. तो डोंट वरी, वीव गॉट यू कवर्ड एट एवरी पॉइंट इन टाइम। तो जैसे कहते हैं कि क्रिप्टो 24/7 चलता है और क्रिप्टो सोता नहीं, वैसे ही हम भी चलते हैं और ज़ीबेट भी सोता नहीं है। तो प्लीज़ यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म एंड गेट एम्पल सपोर्ट एट एवरी स्टेप, एंड वी विल हेल्प यू आउट in carving your financial journey to the most, and will make sure कि हम आपको हर स्टेप पे आपका साथ निभाएं। So guys, with that, I think I would like to end the stream with just 10 minutes left out. We can see maybe some videos on Zbit platform that I will play, and you guys can basically go through this. Make money transfers faster and cheaper. XRP is a digital currency designed to make money transfers faster and cheaper. Imagine sending money across the globe in just seconds instead of waiting days.
That's what XRP aims to do. It's like a bridge between different currencies, allowing people to exchange money without high fees. XRP works on a technology called blockchain. This technology keeps track of all transactions securely and transparently. No middlemen are needed, which means fewer costs and quicker transactions. Many banks and financial institutions are starting to use XRP because it can help them move money more efficiently. This is a big deal. It could change how we think about money transfers forever. People often confuse XRP with Bitcoin. While Bitcoin is mainly a store of value, XRP focuses on facilitating payments. So why should anyone care? Because XRP could revolutionize banking and finance. It offers a glimpse into a future where money moves as fast as information. The world is changing, and XRP is at the forefront of that change. Isn't that exciting? XRP is a digital currency designed to make money transfers faster and cheaper. Imagine sending money across the globe in just seconds instead of waiting days. That's what XRP aims to do. It's like a bridge between different currencies, allowing people to exchange money without high fees. XRP works on a technology called blockchain. This technology keeps track of all transactions securely and transparently. No middlemen are needed, which means fewer costs and quicker transactions. Many banks and financial institutions are starting to use XRP because it can help them move money more efficiently. This is a big deal. It could change how we think about money transfers forever. People often confuse XRP with Bitcoin. While Bitcoin is mainly a store of value, XRP focuses on facilitating payments. So why should anyone care? Because XRP could revolutionize banking and finance. It offers a glimpse into a future where money moves as fast as information. The world is changing, and XRP is at the forefront of that change. Isn't that exciting? XRP is a digital currency designed to make money transfers faster and cheaper. Imagine sending money across the globe in just seconds instead of waiting days. That's what XRP aims to do. It's like a bridge between different currencies, allowing people to exchange money without high fees. XRP works on a technology called blockchain. This technology keeps track of all transactions securely and transparently. No middlemen are needed, which means fewer costs and quicker transactions. Many banks and financial institutions are starting to use XRP because it can help them move money more efficiently. This is a big deal. It could change how we think about money transfers forever. People often confuse XRP with Bitcoin. While Bitcoin is mainly a store of value, XRP focuses on facilitating payments. So why should anyone care? Because XRP could revolutionize banking and finance. It offers a glimpse into a future where money moves as fast as information. The world is changing, and XRP is at the forefront of that change. Isn't that exciting? XRP is a digital currency designed to make money transfers faster and cheaper. Imagine sending money across the globe in just seconds instead of waiting days. That's what XRP aims to do. It's like a bridge between different currencies, allowing people to exchange money without high fees. XRP works on a technology called blockchain. This technology keeps track of all transactions securely and transparently. No middlemen are needed, which means fewer costs and quicker transactions. Many banks and financial institutions are starting to use XRP because it can help them move money more efficiently. This is a big deal. It could change how we think about money transfers forever. People often confuse XRP with Bitcoin. While Bitcoin is mainly a store of value, XRP focuses on facilitating payments. So why should anyone care? Because XRP could revolutionize banking and finance. It offers a glimpse into a future where money moves as fast as information. The world is changing, and XRP is at the forefront of that change. Isn't that exciting? XRP is a digital currency designed to make money transfers faster and cheaper. Imagine sending money across the globe in just seconds instead of waiting days. That's what XRP aims to do. It's like a bridge between different currencies, allowing people to exchange money without high fees. XRP works on a technology called blockchain. This technology keeps track of all transactions securely and transparently. No middlemen are needed, which means fewer costs and quicker transactions. Many banks and financial institutions are starting to use XRP because it can help them move money more efficiently. This is a big deal. It could change how we think about money transfers forever. People often confuse XRP with Bitcoin. While Bitcoin is mainly a store of value, XRP focuses on facilitating payments. So why should anyone care? Because XRP could revolutionize banking and finance. It offers a glimpse into a future where money moves as fast as information. The world is changing, and XRP is at the forefront of that change. Isn't that exciting?
XRP is a digital currency designed to make money transfers faster and cheaper. Imagine sending money across the globe in just seconds instead of waiting days. That's what XRP aims to do. It's like a bridge between different currencies, allowing people to exchange money without high fees. XRP works on a technology called blockchain. This technology keeps track of all transactions securely and transparently.